I was watering it every day. Ugh, don't tell me I overdid it this time. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Which should I choose? Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Mhm. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. We should take a break after all that running around. Yeah, let's rest here for a bit. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Which should I choose? Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom.
हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। ओके, तो शुरू कर सकते हैं हम आज की स्ट्रीम में भी। बहुत दिनों बाद स्वागत है आपका एक और लाइव स्ट्रीम में। आज हम गाइस करने वाले हैं आर कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट, क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है। किस चीज़ का ख़त्म होना, ये नहीं, क्या हो गया? अरे नहीं, एक दिन पड़ा है इस कंप्लीट करने को, और इसके लिए हमको पहले करनी पड़ेगी आर कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट। आज हम पहले वो करने जा रहे हैं, उसके भी पहले करेंगे हम आज की डेली कंप्लीट। वो थोड़ा जल्दी करने के लिए हम अपना रेजन यूज़ कर लेंगे। रेजन वैसे बनाया हुआ है या नहीं देख लेते हैं एक बार। 3 है, 2 और बना लेते हैं। कंडेंस रेजन आया का बिल्ड करते हैं फिलहाल। बड़े बेकार है उसमें क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको चेंज करूं। सही सिनेमैटिक था भाई। Teamwork is dreamwork. Bring it. बेकार। यार जब भी मैं आर्टिफैक्ट फार्म करने आता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट ही कर रहा हूँ मैं तो। आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट नहीं, मैं की रेजन, कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब। थोड़ा बहुत बिल्ड कर लो, बहुत है। Hey there. अब देखो यार, ये क्या मिल रही है बकवास, इसका क्या ही करे बंदा। Everybody stand back. Watch out. चलो कम से कम फास्ट तो हो रहा है, जल्दी से निपट जा रहे हैं। क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, ये तो मेरे पास पहले से ही है। मेरे डिफेंस नहीं चाहिए था। अभी फ़िलहाल हम अच्छा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा पिकी होना पड़ेगा। वैसे अभी भी अच्छा हो सकता है, एनर्जी रिचार्ज वगैरह चला जाए कुछ, और सारे ही स्टैट्स क्रिट डैमेज या क्रिट रेट में जाएं। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, Bring it. और मुझे लगता नहीं मेरी इतनी अच्छी किस्मत होगी इस गेम में। हर बार हार्ड पे जाना पड़ता है, बताओ भाई साहब। लॉक करना भूल गया उसको, चलो कोई ना। यू आर टोस्ट बेबी। Watch out. Hey there. चलो गाइस, आज का रेजन तो हो गया सक्सेसफुली वेस्ट। भी चाहते हैं थोड़ा रेजिन और बनाते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। अभिषेक भाई हेलो, वेलकम टू स्ट्रीम, In the sky. Look at स्वागत है the आपका। oceans.
और क्या हाल चाल आपके? यहाँ पे तो भाई किस्मत बेकार है यार, आज फिर से आर्टिफैक्ट में सोच रहे थे हाई का बिल्ड करेंगे और क्या ही बकवास आर्टिफैक्ट मिले हैं, कहीं बताएं। चलो कमीशन तो हो गए आज के। Thank you for completing. Add Astra. डिस्पैच अगेन। चलो यार डेली वगैरह तो हो गए आज के कंप्लीट। वाह, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक अप करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक बताओ यार, इतना बहुत है या अप करूँ लो करूँ यार, ये बताओ थोड़ा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कितना रखें। देख नहीं पा रहा मैं अच्छे से स्ट्रीम में। मी भी इतना बहुत है। Oh, how many forging commissions do I still have to finish? Let's see. 1, 2. Not so many as I thought. I'll get to them tomorrow. रेपुटेशन भी कर ही आते हैं अभी, लगे हाथ।
from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Everybody stand back! Let's eat this! Hey there! Hiya! Ha! This one's got your name on it! चलो ये तो निपट गया. On to the next one. ये तो बच्चे हैं भाई नावी के सामने. 2 शॉटगन और ये ढेर. चलो नावी तो ठीक ठाक बिल्ड है हमारी कम से कम. आ जा डिस्कॉर्ड पे आ जाओ भाई. लिंक किसका भेजूं भाई? पीसी में दूसरा अकाउंट है. अच्छा अबे लिंक कैसे भेजूं मैं? रुको. ऐड फ्रेंड नहीं है क्या उसमें? स्ट्रीमर मोड इनेबल्ड. अरे यार क्या मजाक है. रुक जा. अरे यार मैंने डिस्कॉर्ड ओपन किया, उसने स्ट्रीमर मोड ऑन किया हुआ है. उसमें मैं कि वो नहीं दिखता, नेम देखना पड़ेगा मोबाइल से. अब नाम क्या है इसमें? हाँ मिल गया. व्हाट्सएप पे चेक कर. भेजता. अरे यार बोलो. ऐड है क्या तू मेरे साथ फ्रेंड है इसमें? हाँ इसमें था. चेक नहीं. नाइस बेटे नाइस.
Friends come to you for words of comfort or encouragement. ठीक है। When it comes to weighing the costs अभी तो of वीडियो their देख रहा है क्या कोई? actions, ओए मैंने हमारी वाली चल रही थी। मेरी कैसे चलेगी? मैं इंग्लिश में तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ तो वो फिर उसका चला तो आवाज आया था गेंशिन। अच्छा तुम भी जेंशिन खेल रहे हो? हाँ इवेंट पूरा कर रहा हूँ। अच्छा आज मैंने सोचा कि वो इवेंट नहीं है, क्या बोलते हैं, अभी तो स्ट्रीम देख रहा है ना? अभी तो फिलहाल इवेंट कर रहा हूँ। एक बार स्ट्रीम देख, मैं भी दिखाता हूँ। और मुझे ये बता कोई इसका इजी वे है या नहीं। ये इवेंट देख रहा है? हाँ गया ये वाला आओ आने तो पहले। स्ट्रीम पे वही वही चला रहा हूँ मैं। How loves being antagonistic. ये Just ignore him when he's mouthing off. ये शिलोनेन दिख रही है तुझे? 1 दिन 5 घंटे। हम्म, ये वाला इवेंट अगर मैं करता हूँ तो मुझे बोल रहा है ये पहले आर्कन क्वेस्ट करनी पड़ेगी मुझे। ये देखो तो करनी पड़ेगी क्या? आर्कन क्वेस्ट कर लो। हाँ तो इसीलिए तो मैंने आज फिर लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। मैंने कहा चलो भी कर लाइव स्ट्रीम भी कर देते हैं। मन तो वैसे इतना एक था। दिन बचा भी मेरे को भी करना पड़ेगा। तेरा भी एक बचा दिन है? बचा है तो मेरे को भी करना पड़ेगा। हाँ, देखो तुम्हारा प्रिय मित्र हूँ मैं, मैंने तुमको बता दिया। तुम तो बताते नहीं मुझे कि मेरे डेली बचे हैं। 2 दिन से तुम ऑफलाइन हो जंक्शन में हैं बेटे है ना? नुबड़ी। चलो वैसे मैं तो सोच रहा था कि छोड़ो मैं कि क्या ही करना है, मैं कि 60 ही प्रीम हो जाए, मेरा छोड़ दो। ऐसे भी 2 दिन के तो भी कर ही दिए बकवास। फिर मैंने कहा चलो लाइव स्ट्रीम भी बड़े दिन से की नहीं है, कर देते हैं। एक चीज़ से 2 निशाने हो जाएंगे, पता लगता रहेगा कि हाँ भाई एक्टिव हैं हम सोशल मीडिया में। 1 मिनट यार, थोड़ा दिक्कत हो गई। क्या? रोटेशन ही खराब हो गई। चल रोटेशन तो होती रहती है। ये बता मुझे आर्कन क्वेस्ट है कितनी बड़ी? बड़ी कितनी? कहाँ तक पहुँचे हो तुम अभी? जहाँ तक पैच 1 था, मैं 1 वाला था। अच्छा वाला शुरुआत ही नहीं किया तुमने उसके बाद? मतलब अरे जब पैच अभी अपडेट कौन सा चल रहा है ये बता। 5.1। हाँ तो मैंने 5.1 से नहीं की, मैं कि 5.0 वाली मैंने आर्कन क्वेस्ट की है। 5.1 की नहीं की मैंने, जब नए अपडेट में आई थी आर्कन क्वेस्ट जो। तो कितनी रहती है? बहुत है तब। हाँ तो बता तो सही, बहुत में कितनी आती है? बहुत है। बोलना यार। पता नहीं यार, ऐसा तो मैं पूरा उसके साथ किया हूँ। तूने वैसे एक चीज नोटिस की मेरी लाइव स्ट्रीम में, एक नई ऐड की मैंने, हैं? नई चीज ऐड की मैंने लाइव स्ट्रीम में, नोटिस नहीं किया क्या? तो मैं तो वो तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है। हेलो हेलो अब कर देना। रुक जाओ, गेंशिन की कर देना तो। बोलो कुछ। हेलो 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 माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। अभी उतना ही है, तुम्हारा ही आवाज बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा दो भाई। कैसे बढ़ाते हैं? अरे यार यार थोड़ा यार तो जैनदी बनो। हाँ ये होली है इधर भी वॉल्यूम। कोई बात नहीं। फिर तुम दूसरों की कम कर दो ना, मेरी ऑटोमेटिकली कम इंक्रीज कर होती है। दिया है। तो डिस्कॉर्ड में जाके भी कर दो ना इंक्रीज।
उसी में किया है मैंने। ठीक है, अभी आई बोलो, अभी ठीक है? ओए, अब ठीक है? हाँ बेटी ठीक है। अब बता, जाके स्ट्रीम में देख एक बार जाके, कुछ नोटिस किया तुमने कुछ नया? हाँ वो तो दिख ही रहा है, क्या? वो लर्निंग वाला कुछ। ऐसे तो इसको कुछ और भी करा सकते हैं, वैसे इसमें एक्सपी ज़्यादा मिलती है तो इसको लर्निंग पे लगाया अभी फिलहाल मैंने। ये पेट है मेरी, पेट, पीसी पेट। सही लग रही है ना? ठीक ही है। ठीक ही क्या है यार, थोड़ा तो क्रेडिट दो। तुझे पता है ये मेरे साथ लाइव स्ट्रीम भी कर सकती है, मैं की लाइव स्ट्रीम वाली भी एनिमेशन भी है इसमें, लेकिन उसके लिए एक्सपी चाहिए। वो लगाया किस लिए वो तो बताओ। अरे ऐसी मैं कि मैंने एक्सप्लोर कर रहा था स्ट्रीम पे जो फ्री गेम्स वगैरह है, खेलनी थी मुझे कोई, तो इसमें एक मैं कि फ्री टू प्ले में ट्रेंडिंग ये भी चल रही थी, तो फिर उन्होंने देखा क्या है, फिर मुझे पता चला ये मैं कि ऐसे डेस्कटॉप पे बैठी रहती है तुम्हारे पीसी पे हमेशा, मैं कि कुछ भी करा सकते तुम, ये मैं कि ऐसी मैं कि भागने लग जाती है एकदम से पीस डेस्कटॉप पे कभी कभी रैंडमली। वो मजा आया। हाँ तो मैं कि ठीक है, मैं कि लोनली सा फील नहीं होता ना फिर, मैं कि अगर डेस्कटॉप पे बैठे हो तुम अकेले जा लंबे टाइम वहाँ पर तक। अभी तुम कर लिया पूरा होता था सोमेरू वाला। सुमेरु का अभी तो बहुत टाइम बचा है ना? कितना बचा? 9 दिन बचे हैं अभी सही तो, है सही। 9 दिन बचे हैं अभी तो। पूरा हो गया ना ये, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। अच्छा हो भी गया वो? चलो कर दूँ, अगर मैंने मैं कि जल्दी कर दी स्ट्रीम आज, मैं कि वो स्टोरी वगैरह है जो आर्कन की, स्किप करनी है क्या मुझे वो या नहीं, या देखूँ मैं? मर्जी है, कर सकते हैं। स्किप कर सकता हूँ मतलब? एक्ट 3 तो शायद बोरिंग है, एक्ट 4 ठीक है। फिर लेकिन मुझे स्टोरी कैसे पता चलेगी, तुम बता दो क्या होता है एक्ट 3 में? एक्ट 3 में तो वही शीतलाली है, उसके साथ ही कहा था आपने तो, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट में तुम कर रहे हो पुल? हाँ क्या पुल करोगे? वेपन वाला किसके लिए? मेरे लिए तो इनविन है। हाँ तो क्या पुल कर रहे हो वैसे, ज़्यादा क्या नहीं करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। क्या चाहिए? वेपन बैनर में ही करूँगा। अबे स्टाफ ऑफ होमा चाहिए या फिर तुमको नाइदा का वेपन चाहिए? तो दोनों तो एक ही में रहेगा ना, अलग अलग थोड़ी रहेगा। हाँ दोनों में, अच्छा तुमको दोनों ही चाहिए? हाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ विन विन है, कोई भी मिले चलेगा मेरे को। चल बेटे, सेट किस पे रखोगे वैसे? एक तो प्रायोरिटी तो होगी। सेट तो होम आ के भाई। और पायरो आर्कॉन क्या है वैसे, पोला नु है? नहीं क्लेमोर। अच्छा, ये तो थोड़ी सी तो दिक्कत हो गई। अरे मैं अपनी आयका को बिल्ड करूं क्या? मैं 2 दिन से अभी रेजन उस पे ही वेस्ट कर रहा हूँ, उसके आर्टिफैक्ट पर। लो मिल तो रहे नहीं अच्छे यार वैसे, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है यार। मैं एक बार वही देख रहा था ना 4.1 का फुल आर्कन का, इसका वॉक थ्रू देखते हैं। शिलोनेन यूज करने से तो न्यूलेट क्या ही मार रहा है। हैं? वो ना शिलोनेन के साथ तो न्यूलेट क्या ही मार रहा है एकदम। मेल्ट कर दे रहा है, मेल्ट। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, नेक्स्ट अपडेट में तो मेरे अकाउंट में भी आ ही जाएगा, ज़्यादा उतर आओ मत अभी तुम।
हंस क्या रहे हो यार? बड़ा मुश्किल है कि पायरो आर्कन लूं या न्यूबिलेट लूं यार। तुम्हारे हिसाब से क्या लेना चाहिए? अगर डीपीएस चाहिए तो ले लो न्यूलेट, और बाकी सपोर्ट चाहिए अच्छा सब डीपीएस टाइप तो हॉबी का। देखा जाए तो मुझे दोनों, देखा जाए तो मुझे दोनों में से एक भी नहीं चाहिए, हो तो वैसे भी रहा है मेरा काम। जोंगली C2 निकाल लो। लेकिन बात ये ना कि न्यूबिलेट की टीम मेरे पास ऑलरेडी बिल्ड है ना? क्या है मैं कि काजुआ होगा, शिनलिन है, पुरीना, हाँ तीनों बिल्ड है ये। चौथा में कि वो आ जाएगा इजीएस्ट में कि फिर तो यही होगा ना। और इसका तुम क्रिट डैमेज क्रिट रेट नहीं भी दोगे तो भी उसके तो आर्टिफैक्ट भी मेरे पास है पहले से न्यूबिलेट के। इतना तो फुरीना का मैंने फार्म किया था, है कि नहीं? वो भी नहीं करना पड़ेगा मुझे। हाँ नहीं यार, नो क्वेश्चन न्यूबिलेट पहले पुल करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 की बैनर के बाद वो पायरो आर्गन फिर से आ ही जाएगी। रीरन होता है ना 3 बैनर के बाद, तब वो पुल कर लेंगे। नहीं तो वैसे मुझे एक मकी नेक्स्ट 10 पुल में 5 स्टार तो मिल ही रहा है न्यूबिलेट। क्या होता है 90 पुल में ही आ जाए अगली, ये भी तो है। नेक्स्ट 10 पुल में न्यूबिलेट मिल रहा है। कितना पुल मार लिया? कुछ नहीं मारा मैंने अभी तक। लास्ट 10 पुल अभी 3 की बिटी है। गारंटी मैंने शिल्ड्रन पे यूज कर ली थी अपनी। मेरे तो पीटी सिल्वर ने खराब कर, एक पीटी में निकली है बताओ। हाँ तो खराब क्या हुई है नुबड़े? एक पीटी में तुझे 5 स्टार मिल रहे थे ना तगड़ा। अबे तो अरे बस अनुज प्लीज प्लीज मेरे साथ तो ऐसे मैं की चूतिया सी चीज ना, मैं की आराम से एक किसी भी दिन में की फर्स्ट पीटी पे ले लूं कोई भी कैरेक्टर। फालतू बकवास कर रहा है। नहीं 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 अनुज तुम मेरे से कुछ सुन लोगे। मैं स्ट्रीम अभी ना मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तुमको, ठीक है? नहीं तो अभी तक बहुत कुछ सुना दिया होता मैंने तुमको। इतना कुछ बोलने के बाद बोल नहीं बहुत, अरे नहीं मैं की अभद्र भाषा का उपयोग कर देता। पता नहीं, बहुत लकी हो तो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। जेंशन इम्पैक्ट आर्कन क्वेस्ट एक देखना आया था, हाय लिखा था शायद। हाँ मैंने लिखा था हेलो तभी बोला था उसको, उसने तभी छोड़ के चला गया। 6 घंटे की है मैं बीसी। अरे यार अनुज इतना बड़ा कौन बनाती यार कौन कैसे यार। स्किप का बटन कहाँ है? वेयर इज माय स्किप बटन? पता ना, ऑटो क्लिक करोगे तो भी अकाउंट बैन हो जाएगा। क्या मजाक कर रहा है? ये कब से होने लगा? अब से क्या आ गया नया रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन तब भी कभी होगा तो होगा। मिल गई कैंडिस, क्लीन करूंगा क्या इसका, कहीं यूज नहीं होती। कैंडस तुम्हारे पास थी नहीं क्या पहले? कॉन्स्टिट्यूशन ही मिला उसको। वैसे लोग यूज कर तो रहे हैं उसको, बोल रहे हैं वापस आ रही है थोड़ी बहुत टीम में। भाई लोग अपने पहले तो चलो आर्टिफैक्ट ही फार्म करते हैं अपना डेली का। C2 हो गई। तुझे पता मैंने भाई साहब तू भी करा कर जा रही है आर्टिफैक्ट फार्म। और कौन सा तू क्या करता है दिन में पूरा? नहीं करना मेरे को, तो दौड़ने वाला काम नहीं करना। 15 मिनट में कर लेता हूँ मैं पूरा। अब तो तुम कर लो भाई। 15 मिनट में क्या है मैं की तुम्हारी हो रही है, डीली हो रही है हैं? मेरा भी होने वाला है यार 60। बधाई हो भाई। तुम बोल रहे थे ना बीपी की दिक्कत खत्म हो जाती है। पता नहीं कितना 500 मिलता है उसमें। एक दिन में 10 कैरेक्टर अपग्रेड करोगे तो कहाँ से होगा फिर? बस बेटे, लेकिन तुम बोल रहे थे कि भाई साहब दिक्कत सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी में कि 60 में आओ। अरे भाई साहब बीपी होगा। सुन तो नहीं, तू बोल रहा था बीपी। अरे सुन मेरी बात, तू बोल रहा था बीपी होगा भाई साहब, पैसों में नहा रहे होगे तुम। मजाक है क्या? कुछ बीपी नहीं मिलता उसमें एक्सपी में, टेक्निकल रूल है ऐसा। कुछ बीपी नहीं होता है, स्कैम है। अबे ये क्या, इसको काम मैंने काम पे लगाया था, ऐसे कैसे काम पे जा।
तुम एक काम करो ना, तुमको कंटेंट मिल जाएगा, तुम मेरे अकाउंट में आकर के वो कर लो, क्या पोस्ट कर लो। क्वेस्ट कौन सी? कौन सी? अरे बोला भी तो करो, पूरा सेंटेंस तो पूरा किया करो। पोस्ट वो वाली, ये क्या बोलते हैं इसको, भाई शिलोनिन का। नहीं नहीं, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है, तुझे पता है? मैं पुल की करूंगा स्ट्रीम। ठीक। शर्म तो आती नहीं है कुछ भी। नहीं, अभी मेरे पास स्ट्रीमर लक है, ठीक है, ज्यादा मत बोलो। मेरा भी देखो, मेरा भी नेक्स्ट 10 पुल में 5 स्टार आने वाला है, तुम्हारा तुमको भी मैं दे दूंगा एक। एक तो लोग भाई सारे वॉइस एक्टर का वो आवाज हटा लिए हैं। सबका मतलब? तू तो बोल रहा था 2 का ही है। अबे सुमेरु के कैरेक्टर्स का भी हट गया, बताओ। हट कैसे गया? वही ये जो चला रहे हैं, लवाल नोलन चला रहे हैं। जो नया इवेंट है उसमें मगी हटाया होगा ना, पिछली में की आर्कन क्वेस्ट में से थोड़ी हटाया होगा, है ना? हाँ पिछले, हाँ अभी तो न्यू इवेंट आया उसमें हटा हुआ है। तो फिर अभी इंग्लिश को चेंज ही कर लेते हैं ना, कोई दूसरी लैंग्वेज में। 17 GB ले रहा है भाई साहब जापानीज में, मैं नहीं कर रहा। हाँ तो पीसी पे है ना अभी, तो तू अभी कौन सा मोबाइल में है? हैं? अभी तो पीसी पे है, जब किस पे खेल रहा है फिर? पीसी पे। अभी क्या स्टोरेज की रोना है तुमको? जब और कुछ डाउनलोड करना है? चाइनीज लैंग्वेज डाउनलोड करूंगा। चाइनीज? जापानीज करना। कम से कम दाते वाय, कम से कम दाते, कम से कम दाते वाय तो बोलेंगे। कोनिचिवा ऐसा कुछ तो बोलेंगे, समझ तो आएगा थोड़ा बहुत। चाइनीज क्या समझ आएगा तुमको? 1 GB का है ना। चेक ब्रो। मंदाक राज, पता नहीं क्या है? मंदाक राज भाई साहब, सॉरी मैं आपको राज ही बोलता हूँ। वेलकम टू स्ट्रीम। चेक ब्रो, क्या है ये? यूआईडी है आपकी? अभी कर लेते हैं भाई चेक आपकी यूआईडी। मेरे को भी बताओ, मेरे को बताओ अभी। RetroRAJ, अरे यार सिंपल एक तो मैं एज सब यू। बैठा ओके चल ब्रो। रहा है बस। भाई साहब अभी आप अपने ही से स्ट्रीम पे बात कर रहा हूँ मैं। प्लेयर नॉट फाउंड, गलत कॉपी कर लिया क्या मैंने? अरे यार को अब मैं भी कहीं पे ढूंढ रहा हूँ। अरे रुको यार, 656 8 ओके। अकाउंट रिव्यू कर रहे हो तुम? अकाउंट रिव्यू कर रहे हैं जी अनुज। वैसे तेरी आवाज़ आ रही है क्या स्ट्रीम में? मैंने देखी नहीं। बस चेक कर लेता हूँ। हाँ तो रही थी उस टाइम। पता नहीं कैच है। अरे यार इसको साइड करो। फिफ्टी वन। अरे क्रिटिकल डैमेज कितना चाहिए होता है रेडन पे? 110 बहुत होता है क्या? 140 150 चलेगा। ठीक है मेरे हिसाब से तो, इतना भी कुछ में की खास नहीं। जलान सही लग रही है। ठीक है भाई, जलान आपकी अच्छी है। वेपन भी ठीक है। काजुआ में कितना ईएम है? ईएम इंक्रीज हो सकता है। एमएलई भी है आपके पास? ओ भाई साहब 5 स्टार वेपन। कौन सी टीम यूज़ कर रहे हो बर्निंग में? तो सही है, क्रिट डैमेज इंक्रीज करो। वैसे मुझे एमएलई का बिल्ड नहीं पता। मुलीना लेवल अप करो भाई, तगड़ी है। क्रिट डैमेज इंक्रीज करो। इसका भी है आपके पास भाई साहब, कतई अमीर हो रहे हो। अरे ये क्या 4 स्टार वेपन है क्या ये, या 5 का वो है? इसका है। 4 स्टार वेपन है, इवेंट में आया था। अच्छा, बड़ा मैं कि सेम से ही लग रहा है, इसके लिए लग रहा है। सीख ले ये। लेवल बढ़ाओ यार, ये लेवल में कि 70 क्या करके कर रहे हो यार इसको तुम?
ये भी बड़ी बेकार है शेंगलिंग आपकी। मेरी आवाज नहीं जा रही शायद स्ट्रीम पे। बैनेट भाई साहब, सही है बैनेट तो। ये तो आपने रैंडमली ऐड कर लिए होंगे। सही है भाई, वैसे तो ठीक है। थोड़े बहुत लेवल अप करो भाई, थोड़े बहुत क्रिट डैमेज इधर उधर करो। तेरी साउंड अभी कर रही है रिपीट माइक में मेरे। ओए अनुज, बंद कर दिया तुम्हारे स्ट्रीम रूम में। बैक टू आर्टिफैक्ट फार्म। और आपकी यार 60 है भाई, देख लो। ओके फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन चल रहा है। कौन सा फाइनल डेस्टिनेशन में? अरे फाइनल डेस्टिनेशन नहीं देख लो क्या? मूवी है क्या कोई? मैंने यार नाम तो सुना है, सुना सा लग रहा है भाई जिसमें मतलब किसी बंदे को पहले ही दिख जाता है कि क्या होने वाला है आगे। चलो होती होगी, देख लेंगे कभी बाद में। वैसे आपको प्रो टिप दूं क्या, अगर मैं कि आपके पास दिन में अगर 15 मिनट एक्स्ट्रा हो तो आर्टिफैक्ट फार्म कर लिया करो, ये वाले जो भी मैं कर रहा हूँ। फ्री होती है एक्सपी एक दिन में। मैं कि लेवल 1 से लेवल 8 तक तो आप पहुँचा ही सकते हो किसी को भी आर्टिफैक्ट को। बाइडू का मैंने ऑलमोस्ट ये पता अपग्रेड कर दिया ऐसे करके, है ना जी? आइडू नहीं है, बेडो है। बेडो भाई बेडो। क्या ये क्रिट डैमेज पे जाएगा, देखेंगे अभी। एचपी परसेंटेज, क्या बेडो को एचपी परसेंटेज चाहिए? नहीं। अरे यार मैं सच जा रहा हूँ वो वाला क्वेस्ट करने, इसके लिए बहुत टाइम बचा हुआ है। कौन सा? वही सिलोनन का 60 फ्री में दोस्त नहीं मिलेगा। इवेंट पे तो बहुत दिन बचा हुआ है। अरे बाइडो को वो चाहिए क्या, क्रिट डैमेज ज्यादा चाहिए, क्रिट रेट ज्यादा चाहिए, या फिर बैलेंस चाहिए? मैं बनाया नहीं है उसको, देख लेने। तब भी गैस करना हो तो क्या? एनर्जी रिचार्ज तो हर कैरेक्टर को ही चाहिए। नया बताओ कुछ अनुज। ब्लम सेट दे रहे हो ना एनर्जी रिसोर्स कितना है? हमारा एक और व्यूअर चला गया छोड़ के स्ट्रीम को यार। अच्छा नहीं किया हमने, क्या उसके अकाउंट को रिव्यू। रिव्यू If you ever करवाना want to है trade तो। tactics, I'm always ready. हमको गरीब बोलने आया था, उसके बाद भी मेरे से ज्यादा 5 स्टार वेपन थे, बताओ यार। एक तो था मैं कि कम से कम एमिली का, लेकिन तुम बस लेवल बढ़ा लिए। लेवल बढ़ा लिए क्या मतलब के भाई हैं? अपना यार का लेवल। हाँ वो ऐसी थोड़ी बड़ा थोड़ी लिया, खेला हूँ मैं बेटे मैं तेरे से ज्यादा, ठीक है। वो तो मेरा डिवाइस नहीं उस टाइम चल रहा था, नहीं तुम्हारे का पहले वाला अकाउंट है मेरा, देखो जाकर के। अनुज एक बात बताऊं मैं तुझे, Ever want to ये trade मेरे tactics? पास तेरे से पहले वाला अकाउंट बैन था। हो चुका है अभी। हाँ वो वाले में बहुत पहले खेलता तुमसे, फालतू बकवास कर रहा है। क्या करूं? वो अकाउंट बैन हो गया, लेकिन मेरा बैन नहीं, मैं कि अकाउंट ही लॉस्ट हो गया। बैन कुछ नहीं हुआ, गायब हो हाँ गया। अकाउंट लॉस्ट हो गया था वो मेरा। कितनी यार दुखद स्टोरी यार वो मेरी। दूसरे वाले अकाउंट का कारनामा बताओ फिर।
अरे मुझे याद होता तो मैं खुद ना रिकवर कर लेता उसको यार। उसमें वेंटी था यार, शिट में कि पता, पहला पुल किया वेंटी आ गया। एक और 5 स्टार था, पता नहीं क्या था यार वो। इसको क्या चाहिए यार ब्रो? आपने वाईटी कब स्टार्ट अरे किया? रेडन किधर है? स्टार्ट तो वही पता नहीं, हो गया होगा थोड़ा टाइम। काफी चैनल बना लिए भाई, ये दोबारा एक और लाइव स्ट्रीम के लिए, सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीम के लिए ये वाला चैनल। बस जो भी मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, बाद में प्राइवेट कर देते हैं 1-2 दिन रख के लाइव स्ट्रीम को। हाँ, प्लान तो कर रहे हैं भाई, वीडियो अपलोड करने का, डालने वगैरह का सीन करेंगे, देखेंगे थोड़ा एडिटिंग से थोड़ा टाइम फ्री मिले। अरे भाई रुक जा, शांत हो जा, मुझे उठा लेने दे बस, अब करते रहो जो काम करना है, फालतू में चढ़ रहा है। रेडन को मैं क्राउन देने वाला हूँ। लाइव स्ट्रीम को वही प्राइवेट कर देता हूँ मैं। रुको बस दिखाई देते हैं वही आपको। और अरे यार मैंने सेटअप हिल जाएगा फिर बाद में। अरे मैं कि ऐसे में कि लाइव स्ट्रीम को भी पब्लिक है फ़िलहाल के लिए, बाद में जब क्लोज़ करूँगा 6 दिन बाद उसको प्राइवेट कर देते हैं, ताकि कोई फ्यूचर में आके वो लाइव स्ट्रीम को ना देख सके। क्योंकि उससे रीच डाउन चली जाती है चैनल की उनकी, अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीम को मैं की पब्लिक रखते हैं मेरे हिसाब से। डिस्कॉर्ड, रुको भाई, डिस्कॉर्ड शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ, मेरा ऐड फ्रेंड कर लेना आप। सर्वर तो भी मैंने बनाया नहीं है, देखना पड़ेगा। सर्वर बना लो ना। हाँ भाई बनाएंगे, कोई बात नहीं, सर्वर भी बनाएंगे। और वो क्लैन वाला सर्वर था ना यार, वो डिलीट नहीं करना चाहिए था मुझे वो यूज़ कर लेते, है कि नहीं? सबको किक करके केक तो मैंने कर ही दिया था उस दिन। कॉपी रेडन हो गई भाई, दे दिया उसको पहला क्राउन। ये भाई नेम है, आप ऐड कर सकते हैं मुझे, फ्रेंड का सेंड कर देना, एक्सेप्ट कर लूँगा मैं। बाद में सर्वर भी बना लेंगे फ्यूचर में यार, अभी के लिए ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अरे यार गलत क्लिक कर दिया मैंने, एक वेस्ट हो गया, शिट। वेस्ट हो गई। अरे आर्टिफैक्ट है, मैंने गलत पे क्लिक कर दिया, वो सब्जी दे दी उसने। इन्वेस्टिगेट तो लिमिटेड ही होता है ना। सब्जी अरे मैं कि पता नहीं क्या मूली वगैरह देती उसने यार। रेडिश सब्जी दे दी भाई सर। और क्या क्या टोटल ट्रैश। देखो तुमको मैंने नाविया के स्टिकर हाँ तो क्यों भेजा, मैं उसको डिलीट कैसे करूँ मैं, देखिए वो आता रहेगा मेरी वहाँ पे। हाँ अभी वो देखना लेफ्ट, डिसअपीयर। हाँ वही ना, वो मुझे नहीं चाहिए, क्या तुम फालतू में करते रहते हो इस वगैरह सेंड, अभी बेकार। अरे यार अनुज देख, अगली बार नहीं सेंड कर देना, मैं तुझे फ्रेंड लिस्ट से हटा दूंगा, बकचोदी नहीं, फालतू बकवास करनी है, बताओ। इतना अच्छा तो लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है उसमें, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो लेआउट को खराब करता है। एक तो यहाँ पे स्पीड रन कर रहा हूँ मैं इतना अच्छा, तुम बताओ बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे वो नाविया की मोड से। अरे यार फिर वो अभी पहले डेली वाला तो कर लें, होने वाला ही है वैसे भी। मैं जा रहा हूँ क्वेस्ट करने, फोकस मोड ऑन करके। फोकस मोड पीसी में भी फोकस मोड होता है क्या? मैं क्वेस्ट के लिए करने के लिए फोकस मोड रहता है। मेरा रीजन भरा पड़ा है, मैं रीजन खत्म करके आता। इधर गोल्ड वाला किधर है? गोल्ड चाहिए मेरे को। क्या तू मोरा के लिए रेजन यूज कर रहा है? आगे गरीबी गरीबी छा गई है। मैंने पहले ही बोला था कर लिया कर लो, नहीं
हमको नहीं करना, हमको तो भाई साहब आर्टिफैक्ट फार्म करनी है। तो अभी आर्टिफैक्ट हो गया तो मोरा फिर से क्या मतलब है ना। कौन सा कैरेक्टर पुल कर रहे हो भाई राज आप? कमेंट में बताओ हमको। नेक्स्ट बैनर में पुल क्या कर रहे हो? नाहिदा नहीं था। नाहिदा कर रहे हो क्या? मुझे समझ नहीं आता, जैसे ही हम भाई कुछ पूछे भाई बंदे भाग जाते हैं, शर्मा आ जाते हैं भाई, कमेंट ना करना पड़े, आंसर ना करना पड़े हमको। वो करो तुम, मैं आ जा करके यूआईडी भेजता हूँ, अकाउंट रिव्यू करो। अरे बस से भाई, तुम्हारे अकाउंट का क्या रिव्यू करूँ, वो मेरे पास पहले से ऐड फ्रेंड है। शिलोनेन मर जाएगी। बंदे ने रिक्वेस्ट तो भेजी थी, डिस्कॉर्ड में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुम्हारे साथ डिस्कॉर्ड में जोड़ना चाहता। जोड़ लिए भाई बंदे फिर हमने। ये बोले कॉल पे ऐड करो करके, है ना। और तो बोल देंगे भाई, स्ट्रीम में नहीं ऐड करते हम, ऑफ द स्ट्रीम कर लेंगे। ना सब लोग ऐड कर लेते स्ट्रीम में भी, तुम कौन से एकदम गुंडा बन रहा 3 सब्सक्राइबर लेके। है ना? बताओ भाई, बंदे ने भैया गाली वगैरह और होगा डीमोनेटाइज चैनल, तो वैसे अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, बात तो ये भी है। डीमोनेटाइज पहले हो जाए, मोनेटाइज से पहले है। बताओ, मैं अपने आप को कंट्रोल मुश्किल से कर रहा हूँ। आज भी तुम्हारे वर्ल्ड में आके ना मैंने सारे मिनट चुरा लिए। आ जाओ, देख लो करके, ले लो पंगे। एक्सेस तो मेरे पास तुम्हारे वर्ल्ड का भी है। फिर मैंने मिंट नहीं चुरानी, मैंने तो तुम्हारे वेपन ही बस फेंक देने। फिर बोलोगी वेपन कहाँ है, वेपन कहाँ है, मेरी भाई से वेपन कहाँ है। फिर रोते फिरोगे, फिर बोलोगे भाई मैंने क्विट कर दी जेंशन। फिर यूट्यूब पे वीडियो सुन तो सी, तुमको एक रील भेजा फिर सुन तो सी, फिर यूट्यूब सुन तो सी, फिर वीडियो डालेगा यूट्यूब पे तू, व्हाई आई क्विट जेंशन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड 5 रीजन। 5 रीजन कुछ 5 रीजन। और क्या? 5 रीजन की एक ही रीजन होगा। नहीं मैं कि 5 रीजन में कि एक तो मैं कि कोई अलग रैंट होगा, नंबर 1 पे मेरा पॉइंट होगा कि मेरे दोस्त ने सारे वेपन वेस्ट कर दिए। मैं तो तुमको आइडिया दे रहा हूँ। अबे सुनो, मैंने तुमको एक रील भेजा था ना, पंजाबी बोल रहा था बंदा। हाँ, तो उसका क्या? उसका इतना बढ़िया पंजाबी तुम काहे नहीं बोलते हो? अभी मैं पंजाबी स्ट्रीमर थोड़ी बन रहा हूँ, मुझे चाहिए पूरी इंडिया की पब्लिक। बोल देंगे पंजाबी भी भाई, जब फेस रिवील करेंगे तब भाई लोग सरप्राइज हो जाएंगे, अरे भाई साहब इसकी इतनी अच्छी हिंदी है, ये पंजाबी है, व्हाट द फक। है कि नहीं? वो करो, तुम क्या कहते हैं, ये 100 सब्सक्राइबर स्पेशल। 100 क्या, मैं 10 सब्सक्राइबर स्पेशल करूंगा वे। तुम भाई 2 जन आ जाते स्ट्रीम में तब शर्मा करके बंद कर देते हो। कब शर्मा के बंद किया मैंने? आ देख बंदा आया, मैंने बात की ना उससे फेस टू फेस, उस दिन नर्वस हो गए एकदम, बंद कर दी अपने फियर को देख मैंने आज फेस किया, धीरे धीरे कंफर्टेबल होएंगे। अरे रुक, फोन आ रहा है। सिलोनेन को इतना डैमेज क्यों पड़ रहा है?
हेलो अनुज, ओए जरा स्ट्रीम संभालो, अगर कोई आए तो हाय हेलो बोल देना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ 1 मिनट कहाँ में। जा रहे 1 मिनट में आ रहा हूँ, मम्मी को कुछ बताने। यहाँ बाय। हो? अरे This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone म्यूट to करके तो जाता है। हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज? आ रही आवाज? यार आ गए वापिस भाई, बैक टू द ग्राइंड। ओ आपने वाईटी कभी स्टार्ट किया? अबे स्टीम लैब तो कम से कम लगा दो ना अपने उस पे। स्टीम लैब क्या होता है? अच्छा वो बॉट की बात कर रहा है क्या? हाँ नाइट बॉट या तो लगा दूंगा कोई ना। डिस्कॉर्ड वगैरह ऐसे कमांड डालेंगे तो दे देगा सीधे। हाँ हाँ लगा देंगे, लगा देंगे। हंस क्या रहा है अभी? एडवर्टाइजमेंट हैं? अबे एडवर्टाइजमेंट देखे एक नंबर का। ये भी एक नंबर होंडाई का एडवर्टाइजमेंट है। भूत आ गया सामने। ये भी हो गया। लास्ट 2 स्पॉट। साइड हो के निकल गया। एडवर्टाइजमेंट बना भूत भी आ जाएगा तो निकल जाएगा। ओ ये अनुज माइक ऑफ किया करो यार, अगर बैकग्राउंड में बोलना है तुमको। इतना क्या माइक वाइक है ना बेटे, व्यूअर को डिस्ट्रैक्ट होता है तुम्हारी वॉइस से, बैकग्राउंड से, ठीक है? व्यूअर भाई हाँ है भाई, व्यूअर हैं व्यूअर भाई। हेलो बोलो गाइस, वही एक व्यूअर है ना? तो मेरे को अपना वो गोल्ड वाला नहीं मिल रहा, किधर है, कौन सा आइलैंड में है? गोल्ड क्या है? टीना जो गोल्ड किधर आता है? मोरा वाला ये रहा। फाइनली हमें मिल गया। 2 बार और करना शायद। कितना बचा है मेरे में? रिक्वेस्ट कर दोगे? अरे यार ये क्या है, फाइट वाला हो जाता है हर बार। तुमसे रुका नहीं आता क्या? अभी ये कौन है? अनुज मेरे से मेरे खुद के वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, क्वेस्ट वगैरह। बाकी स्ट्रीमर लोग कर देते हैं इनको। क्या मजाक कर रहा है? कौन किसका कर रहा है? मैं भी जान लूं। और वो हीरो इस लाइव वो भी कर देता है अपने दोस्त लोग को लाइव स्ट्रीम में। क्या मजाक कर रहा है? कब करता है बे? उसको तो कितनी बार करता है वो, देखा मैंने। मैं तो बिलीव नहीं करता। उसको तो अपनी स्ट्रीम बड़ी करनी है, उसको बस चाहिए कंटेंट, फिर वो तो कर देता होगा। हाँ तो दिमाग है ना उसको। हाँ दिमाग क्या, फिर अभी उसके पास है व्यूअर तो कर देता है। अभी क्या मैं अभी क्या मैं की कम से कम 100-200 बंदे दो तो फिर मैं टाइम भी स्पेंड करें, बताओ। ए थोड़ी जीरो व्यूअर के पीछे भाई से तुम्हारी रिक्वेस्ट करते रहे हम, बता दो एक्सप्लोरेशन तुम्हारी मैं कर दूं, है ना? बोल दो। अरे एक्सप्लोरेशन से ज़्यादा वो भाई नेटलैंड की एक्सप्लोरेशन भी करनी पड़ेगी यार अब तो। क्या मजाक है। मेरा तो हो गया। अनुज तो तुम कर ही लेते हो, मेरा भी कर दो। 200 रुपये दे दूंगा तुझे मैं। तुम अपना बना तो रहे थे यार एक्सप्लोरेशन, यार वो किया नहीं क्या तुमने बिजनेस स्टार्ट? हैं? क्यों करना है वो? अरे यार अनुज करो ना यार, नीड है लोगों को। वो मैं चला भी दिया तो क्रेटोस नाम का एक जो प्राणी है उसको बैन रखूंगा मैं अपने। क्यों रखोगे यार? तुम कस्टमर ही तो है वो भी। यार ऐसा मत करो अनुज यार, स्टार्ट करो यार तुम।
माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह। क्रिट डैमेज दे दे प्लीज। शिट, यूजलेस। कैसे मारूंगा बे? इन लोग को पानी पानी वाले आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग न्यूलेट लेके रखा हूँ। ओ पानी पानी पानी। पानी पानी। चिलोनन से मारना पड़ रहा बता। प्लीज एक अच्छा आर्टिफैक्ट बन जा, एक बार क्रिट डैमेज में चला जा, वही बहुत है मेरे लिए। इसका आर्टिफैक्ट बना रहे हो? बेडो का। फिलहाल तो मुझे लग रहा है बस मैं वेस्ट ही कर रहा हूँ, सही बताऊँ ना। और क्रिट डैमेज एनर्जी जानी चाहिए, ये ठीक ठाक सा हो सकता है ये। चलो हो गया रेजी न्यूज। अब जाते हैं, वो कर देते हैं, 5 बना देते हैं। व्यूअर आए हैं राजा। क्या? जितने व्यूअर आए हैं, 2 आए हैं। एक अभिषेक, एक राज नाम से आया था। रेंट कितने हैं? करंट तो कोई नहीं है अनुज, जिंदगी जैसे चल रही है लोनली वैसी चल रही है स्ट्रीम भी। नहीं ऑनलाइन फ्रेंड देखना बस, हम्म म्यूट चैट कर देते हैं। शिट, डिफेंस, क्या मजाक है ये। यू नो बट मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, ये लगाना पड़ेगा मुझे। क्या ही किस्मत है। तेरा वो आसूका वाला स्टिकर अभी भी आ रहा है क्या? जो मैंने दोबारा भेजा। हाँ वही बोल रहा हूँ, तुम दोबारा भेज रहे हो यार। हाइड का ऑप्शन नहीं है क्या? दिक्कत है तुमको? मुझे बस देखने में अच्छा नहीं लगता जब वो चैट सी दिख रही होती है मुझे। हाइड करूंगा मैं, गायब हो जाएगा थोड़ी देर। डिलीट, हाँ देखो डिलीट कर दिए, जाओ अब कर लो, देख लो कर दिया मैंने डिलीट। ऐसे ही होता है ना, डिलीट कर दिया, चैट डिलीट कर दी मैंने अपनी तुम्हारे साथ। अब बोलो। फिर भेजूंगा तो फिर दिखेगा। हाँ तो मैं फिर डिलीट कर दूंगा, फिर मैं अनफॉलो कर दूंगा, देख लो। फिर कभी ऐड ही नहीं करूंगा। हाँ तो फिर ठीक है, मत करना। अकाउंट मेरे पास ही है, तुम्हारा भी, ये भी जाए देख लो। देख लेते हैं। कर तू बेटे कर। ज्यादा हल्के में ले रहा है। अभी एक जीमेल हैक कराऊंगा ना, फिर भाई से बोलो कि अरे यार अकाउंट दे दो मेरा वापस मुझे, समझे? अरे चल शुक्र, शिलोनन का तो आवाज। शिलोनन क्या जंक्शन का डाउनफॉल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्या, कि वॉइस एक्टर नहीं है इनके पास? दूसरी गेम में भी ऐसा ही हो रहा है क्या वैसे? नहीं इसी में हो रहा है। इसी में क्यों हो रहा है फिर?
मैं अभी आता हूँ, ठीक है, अगर गेट खोल के आता हूँ पापा का। क्या बोल रहा? My potted plant on the porch has died again. ठीक है, What's कैसे watering it तुझे every day? बहुत पावर आ गया सही ना। ये एकदम ट्रिप पे क्लिक कर रहा है। स्टोरी कर रहा है। आई एम बैक, हेलो। मेरा लास्ट स्पॉट बच गया बस अभी, हो जाता है। आर्टिफैक्ट वाला। ये क्या ही उड़ के जा रही है। मैं तो स्किप कर रहा हूँ तो मैं शिलोन की स्टोरी स्किप करोगे तुम? शिलोन की स्टोरी नहीं है, वो उधर का है, क्या मजाक है। हाँ, एरिया का कष्ट है ये। तो तुम वो भी करते हो पूरी? फॉलो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं कि देखते हो तुम, पढ़ते हो उसके? स्टोरी क्वेस्ट जैसा ही है, इसलिए वॉइस डाल के रखे हैं। तू तो भाई इधर बैठ, टिक के नहीं बैठा जाता इससे भी। अबे टिक के की हिंदी क्या है? हाँ? टिक के, जैसे हम ये नहीं बोलते तू टिक के बैठा रहा है, मैं शांति से बैठे रहो वहां पे। शांति से बैठे ही होता है, शांति से ही होता है क्या? जगह टिक के बैठ जाए। हाँ, इसको बैठा रहे हैं। अरे अपनी वही बोल नहीं रहा था तुमको, पेट वो वाली स्ट्रीमर पेट जो भी है, वो डेस्कटॉप से कहीं और भग गई थी, को पकड़ के फिर से वहीं पे अटक दिया। हम तो आ नहीं रहा। हम तो आ नहीं रहा। Hello everyone, I am the water reminder assistant in the group. I hope people who see the message can drink a glass of water with me. Join me as a person who drinks 8 glasses of water a day. ये बोल रही है वो मुझे। ज्वाइन करना चाहोगे तुम अनुज उसको? तुम उसकी टीम में हो क्या? उसी की टीम में जो बता रहा हूँ था मैं तुमको। मेरे को नहीं बताना था। तो स्ट्रीमर में आओ। नाम क्या रखे वैसे इसका? मैंने नाम अभी तक सोचा नहीं है। वही डिफॉल्ट ही रखा है इसका। आया का रख दे है अनुज? आया का रख दूं?
कभी कभी मेरे दिल को ख्याल आता है। नींद आ गई भाई साहब। हमारा स्ट्रीम तुमको खुद को देख के नींद आ रही है। मुझे करके आ रही है देख के थोड़ी। जेंशन की कौन सा ये मैं ये पी गेम प्ले खेल रहा हूँ मैं इसका, जो नींद ही ना आए। इससे अच्छा कराना पड़ता है ना। इससे अच्छा लॉगिन प्रोटोकॉल खेल लूँ यार मैं। गेम तो इंटरेस्टिंग है वो, मज़ा तो आ रहा है उसको खेलने में भी। खेलो खेलो। उसमें ना मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैं कि काफ़ी लोग मैं कि इंग्लिश बोलते हैं ना वहाँ पे, मैं कि सारे हिंदी नहीं बोलते हैं। मैं कि वो लॉबी अकेली इंडियन वाली ढूंढनी बड़ी मुश्किल है, समझ रहे हो? तो फिर वो तुमको पता है मेरी इंग्लिश मैं कि समझ तो आ जाती है लोगों को, लेकिन थोड़ा फनी जरूर लगता हूँ मैं बोलता इंग्लिश। तो मैं इसकी स्ट्रीम इसीलिए नहीं कर रहा, समझे? प्रोटोकॉल। हाँ, लॉकडाउन प्रोटोकॉल, उसमें वॉइस चैट ही करनी पड़ती है, चैट नहीं कर सकते उसमें तो। Sharon, I have brought the person who need an ancient name. She's super amazing and I have already learned tons of stuff from her. I can vouch that she's really worth of a hero name. Yes, Oh, so yes. I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Wait, are you Outlanders? Yep, we're travelers who just arrived in Outland not too long ago. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that. Oh, you are saying the pyro Archon didn't tell you? No, the only thing she said is that a new hero had pledged herself to the plan, but we need to forge an ancient name to ensure she'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skill. But I seem to understand where the true difficulty lies. Aren't you upset? No, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just... the Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. But they were all performed outside. Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in that land, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be कैसे बनाऊं? तू बता दे मुझे टॉपिक। अब मैं क्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टोरी पे ध्यान दूँ, कहाँ पे ध्यान दूँ? That's just how it is. The Wyab don't want just anyone to get a name, huh? Malika, of all people, should know better than anyone. Yet she's still entrusted the task of forging the ancient name. इसीलिए ना मैं जंचन की स्ट्रीम नहीं कर रहा था यार। क्या मजाक है? मैं किसकी कंटेंट किसका बनाऊँ? मैं डेली आके बता डेलीज करूँ, और मैं कि हम हर बार ऐसे सरप्राइज करूँ कि अरे यार आ तो डेली करेंगे, आ तो राइजन उड़ाएंगे। 15 मिनट की स्ट्रीम कंटेंट खत्म, फिर बाद में क्या? ये अगर स्टोरी क्वेस्ट करने आ गए तो तुम स्टोरी सुनोगे या फिर चैट वगैरह पढ़ोगे? चैट पढ़ने को मेरे पास चैट भी नहीं है, बताओ। और क्या बताऊँ? डेड चैट को क्या पढ़ूँ मैं अब?
इसलिए दूसरी सिंगल प्लेयर गेम वगैरह की स्ट्रीम जैसे बीच में शो बनाता है, कम से कम वो ठीक तो है। मैं कि कुछ तो कर, तो कुछ कुछ नया तो हो रहा है कि कमेंट कर सकता है वो कुछ कि हाँ हैपनिंग हो रहा है। इसीलिए नहीं मैं स्ट्रीम करता है। Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. You mean you're Well, what else can I do? फक दे यार, मैं नहीं स्ट्रीम कर रहा आज के बाद यार, It's not ये like I can टेंशन outright की। defy the order of my archon. दिस इज गाइस लास्ट बाकी स्ट्रीम है जेंशिन मेरी। स्ट्रीमर का लाइव देख खोल लो। हैं बाकी जेंशिन स्ट्रीमर का लाइव देख खोल लो, कहीं इंटरेस्टिंग बात है। मुझे तो नहीं लगती इंटरेस्टिंग, मैं तो देखता नहीं इसीलिए। If she gave मुझे me तो the लगती है sword, उनकी then she इंटरेस्टिंग believes the स्ट्रीम। ancient name is an indispensable part of our plan, and that I'll be able to find a way बोल to लो जो get करते हैं ना, out. वो भी इतना भी तंग कर लो, In देखेंगे other words, हम। the order isn't क्या a करते हैं, नंगे ही बैठ जाते हैं क्या, क्या करते हैं? अच्छा आइडिया है, ज्यादा जल्दी फेमस हो गए। बदनाम भी नहीं होना है। नाम तो रहेगा ना। बस बस अनुज। See if we can find some special way to pull this off. If we really cannot make it work, I'm sure we can still go back and talk to Pyro Organ, The right? key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence मैं and पढ़ रहा हूँ the तो। voice of a ओ wild क्या boy वो in the kingdom before. पता नहीं, एक नुबड़ी सी जिसकी वॉइस नहीं दी वो पढ़ रहा हूँ उसके, उसकी लाइंस। If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. अच्छा क्यों कचीना? हाँ well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best plus, considering the unprecedented nature of this situation? I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone would probably not be enough. I don't know. That requires a level of knowledge that we need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is Lali at the Masters of the Nightwind. The one. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find a person who can make something like that. Must be pretty impressive. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in a room and does. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her. I hate to break it to you, but Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. स्टोरीज में भी। yeah, at the cost of. Great going, Moeka. We're What already are off to a Hmm. In that case, I guess your only option is to try to emphasize बिल्कुल that this बीच is चला an गया, important पकड़ order लेता from हूँ the मैं। Pyro Archon. एक तो भाई तुम ये बेकार से क्वेश्चन पूछते हो मुझे से, मैं कि जिनका ना कोई सर है कोई ना पैर, कोई पागल होगा मैं कि बिना मतलब कैसे करेगा पहले तो। Also write you a letter on your behalf. If ऐसे you काम मैं करता ही नहीं, तुम करते हो क्या ऐसे काम? नहीं तुम करते हो ना ऐसे काम जो तुम्हारे जूते पड़ते हैं, मुझे पूछ रहे हो? तुम पीछे नहीं नहीं यार, नहीं पहले उतरी जूता मार। बस ऐसे काम तुम ही कर सकते हो। तुम सोच लो भाई क्या करोगे तुम, मैं नहीं करता। Paimon sure hopes a how won't it. All right, Kaniche is a seasoned मैं negotiator. सोच रहा हूँ 60 प्रीमोजन वर्थ नहीं है ये, मैं कि मेरे इतने ग्रैंड के यार। और अच्छा हुआ, Please just give me a moment. नहीं वर्थ है बूंद बूंद सागर पड़ता है। भाई साहब, मेरा वो पड़ेगा, जुज बढ़ेगा इससे, क्या बता मजाक नहीं यार जी। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ इसकी स्टोरी से, मुझे नहीं करनी यार स्टोरी हो रही, मुझे सीधा तुम प्रीमोजन दे दो। 120 प्रीमो मिलेगा दद्दू। I'm sorry to put this on. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? राजवीर मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे अपनी बुक ही पढ़ लेनी चाहिए इससे अच्छा, तो कम से कम कुछ वैल्यूएबल चीज़ तो मिलेगी। यहाँ पे मैं कचीना का ये इसको ऑटो पे रख के बुक पढ़ लो। क्या पढ़ूं? बोल रहा इसको ऑटो पे रखे बुक पढ़ लो। मैं कि स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी। ऑटो आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं पढ़ते है, रहो तुम।
जा तो भी तुम बुक पढ़ दो पूरी अच्छे से यार, मैं कि ऐसा थोड़ी होगा कि तुम कि हाफ ऐसा काम करोगे। And that Shilonen is one of 4 that have already been Oh, well, then मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या गेम है जेंचर इम्पैक्ट यार, ये मैं कि मजा क्यों नहीं आता बे इसको खेलने तुम में। by your side गेंशिन को is बोलो perhaps the best solace 5.2 when जल्दी से लाया, मेरे facing को such a bleak आगे की reality. स्टोरी देखनी है। यहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ करते करते, तुमको और चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए यार, कॉन्क्वेस्ट बंद करो यार। नहीं चाहिए ना 5 वो एक्ट 4 तो अच्छा लगा था, एक्ट 5 देखते हैं, बंद करो, फास्ट स्टोरी है ना। बंद कर दो गाइस यार, कॉन्क्वेस्ट लाना प्लीज, मेरे से नहीं ऊपर होगा, एक नंबर। मेरे से नहीं चाहा जा रहा। अभी ये देखो ये शिलोनिन कैसे देख रही है। Given how the Masters of the Night Wind love to babble about रुको तुमको dreams and स्क्रीनशॉट revelations भेज, अरे that बस are भाई, not मुझे नहीं real, देखना, if they consider him the odd one, देखना तो पड़ेगा। नहीं देख रहा मैं ना इसकी स्टोरी देख लेता हूँ, बाद में स्किप कर देता हूँ सारी यार। राजवीर हम्म, हमारे व्यूअर कहाँ नहीं बढ़ रहे। पता नहीं यार, डेड है। The False Sky, Angels Fallen from Celestia. The simulated world that is Tevat and forbidden knowledge. Not only are we learning why people have died learning these ancient secrets, this false sky that the Fatui Harbingers are fully aware and trying to overthrow Celestia with the remains of the third descender. But this is what it's always been about. Everything that we've done, all the secrets, all the speculations, it all comes down to this. The false sky and the big lie that is Tevat. So let's go over this Archon quest because holy crap, we got a lot to go over. Okay. We also got a ton of details on the inner workings of the Fatui and the Harbingers and their own agreements with the Saritsa. Because these are some of the biggest lore drops we ever got. Not just references in old ancient books or texts, or some cryptic dialogue or voice lines. No, we literally saw Mawika pretty much go Super Saiyan and launch a Kamehameha to thwart the Abyss's attempts to conquer Natlin. But she also hit the false sky. This same false sky that's been referenced multiple times in the game, but we never. And because we left off in 5.0, Mawika told us the ancient hero of the Children of the Echoes, Shilonen, would forge us an ancient name. And that's where we start this quest off. But she tells us that we need the help of someone from the Nightwind tribe, Silali, who I gotta say is probably one of my favorite characters in this game. She is hilarious. But in order for her to help us gain an ancient name and help Shilonen, we need to help rescue Oraron, who is speculated to have been abducted and coerced by the Fatui and the captain. But he ends up finding us first and wants us to hear the captain out, what he has to say. The captain telling us that there is another way that the Pyro Archon is hiding from us and that the oath has gone unfulfilled. We're talking about the old Night Warden Wars 500 years ago. Now we know the captain was here in Natlin. We'll get into that in a second. But then Silali scolds the crap out of Oraron. And then as we're making our way back to the stadium, he disappears again. So she is absolutely livid, but we learn that he actually is helping the captain willingly. And we learned that's because he tailed the captain for a while. The captain originally was looking for Silali, but Oraron wanted to make sure that he had good intentions. And after watching the captain and tailing him, this is where he ultimately decided to step in during the fight and save the captain's life with his duel against the Pyro Archon. He realized that the captain also wants to save Natlin, and Oraron also doubted the Pyro Archon in the current system and planned to save Natlin from the Abyss. That is why he joined sides with the captain. The captain is कहाँ तक की स्टोरी स्किप करूँ अनुज में? हैं? तुमको कुछ बोलने वाला तुम भुलवा दिए मेरे को। चल बता तो सही।
एक्ट 3 कर दो स्किप। एक्ट 3 कहाँ तक है? पूरा हाँ, क्या होता है एक्ट 3 तक? एंडिंग तो बता मुझे। बकर बकर है बस। अरे बोल तो सही, कहाँ तक है? मैं की स्टोरी क्या है वो? मैं नहीं स्टोरी मालूम सुन मेरे रहा हूँ को, उसकी। उतना नहीं याद है। स्टोरी सुन रहा हूँ उसकी मैं कि कहाँ से इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती है, फिर वहां पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। बताओगे? जो भूमिका और कैपिटानो आते हैं वही ठीक है वहीं से। Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. I have. Huh? Yeah, well, she can. But let's go to. That's true. What? Paimon doesn't seem... Well, we tried to be. That might be true, but this is still a request. Yes, the only thing is that she often has very high expectations. Huh. So even though, unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter. Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us. If that's what aging does to you, Paimon never wants. I'm on Shilonen को really? बताओ निकनेम दिया So, स्मिथ। that's how you see me? ठीक है ऐसा। Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled बात old को hag, सीधा right? समझ। Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? See, Lolly. Wait, you're Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley. Not. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. Paimon, sorry. What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part. But, of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology, only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. मेरी आर्कन क्वेस्ट कर दे तू। Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. नहीं करूँगा तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। What's with. Was she feeling embarrassed?
यार When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems... Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient... Correct. The situation isn't like anything we've handled. solve I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an Outlander. Well, that would ना be a टाइम first. लगेगा यार And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Yeah, that's why we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. पर क्वेस्ट करो ही करो ऐसा वो कर देते हैं लोग I suppose यही I'll just तो call गलत you बात है Traveler इनकी। for now. Traveler, come here. Let me take a good look. चलो मेरा तो क्वेस्ट करना है तुमको तो एक्सप्लोरेशन भी करना है Well, मैं नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा conflicts between people. 400 प्रीमोजेंस भाई ले लो अपने मुझे नहीं चाहिए 400 प्रीमोजेंस मिलेगा हाँ मुझे नहीं चाहिए भाई स्लेव थोड़ी उनका मैं राजेश 60 प्रीमोजेंस में ये 400 है नौकर थोड़ी उनका मैं Again and again, you've braved them to find new worlds. A weary इतने yet दिन से free खेल ही soul. रहे हो Even the most रोज जाके vigil दिहाड़ी leaf in कर the रहे हो forest कमीशन will की हो pray बोल for रहे your नौकर नहीं happiness. Those are all the things एक्सप्लोरेशन that नहीं कर रहा say. मैं मेरे से नहीं होती You've एक्सप्लोरेशन experienced far more than ज़्यादा most मुश्किल है वो mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift तो a बहुत torch. तेज नींद आ रही What thing? है जा रहे Don't बीजे spill में खेलने Paimon. भाई Isn't इसके Trevor बाद gonna be okay? Shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last. Isn't that kind of like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your. Oh, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroron. The Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. Yep, we'll be sure to play it safe. ओए अनु सो गया क्या तू All right, now it's time for us to catch that Hello. lad and bring him back. I'm sorry सो I गया didn't क्या do it तू earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's. He बोलना has always lived नहीं alone, कर रहा हूँ कुछ and I found a broken jar in his house. टेस्ट कर रहा हूँ There, कुछ and अरे मेरे पास एक interestingly अच्छा enough, आइडिया आ I गया saw मैं some दोबारा stretch वही marks in वही the ट्रिक house अपनाता हूँ that लेफ्ट did पे not एक आधी match any मूवी of our चला local लेता हूँ weapons. My guess is है they were ना left by Snezhnayan arms. 2 मूवी देख लूंगा मैं स्ट्रीम बंद करना पड़ेगा उसके लिए बंद क्यों करना पड़ेगा चलती रहेगी स्ट्रीम तो मेरे पास तो 2 स्क्रीन है ना मित्र दूसरी पे ना अच्छा पीसी होने के भी फायदे ना उस पे ऑडियो आएगी क्योंकि मैंने सेपरेट कर रखी है ऑडियो किसी को क्या ही पता चलेगा अगर कोई व्यूअर आएगा मैं दोबारा मूवी पॉज कर दूंगा पिछली बार मैं ऐसे ही कर रहा था
अबे तो तुम दूसरे दूसरे स्क्रीन में मेरा क्वेस्ट कर दो, ज्यादा मजा आएगा। अनुज ये बोल के तुमको शर्म नहीं आ रही? चूतिए। पकौड़े पकौड़े हैं नहीं पकौड़े। बिल्कुल नहीं आ रही। पहले मैं कॉफी बनाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। तो थोड़ी इधर ही भेज दो यार, बहुत नींद आ रही। पहले कॉफी बनाता फिर मूवी ढूंढता हूँ भाई। ठीक है भाई, कॉल रख दूं क्या फिर मैं? मूवी नहीं तुम मूवी नहीं, तुमको मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। दूसरे स्क्रीन मेरा क्वेस्ट अबे करो, बस ज्यादा अनुज मजा आएगा। बस, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे से नहीं होगा यार। ट्राई करो राजू, नहीं मजा आएगा एकदम। नहीं नहीं, चल ठीक है, मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ भाई। यहाँ पे स्ट्रीम पे देखना अगर कोई, स्क्रीन बंद कर दो। नहीं नहीं बंद नहीं कर रहा, अगर कोई स्ट्रीम पे हाय हेलो बोलना देखना, ठीक है? ओए सुन गया? मैं अपना क्वेस्ट कर रहा, मैं नहीं देखूंगा। अरे यार थोड़ा देखो तो सही यार, थोड़ा देख लो भाई। हेलो हेलो हेलो, बैक 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 बैक। अनुज वॉइस आ रही है मेरी? Oh, sounds like the Fatui broke into its कोई आया तो house नहीं and स्ट्रीम took पे? him hostage. जल्दी बोलना। ओए नहीं आया। तुम ही बैठे हो गए स्ट्रीम पे अभी? एक व्यूअर दिख रहा है मुझे, वो बोलना। तुम्हारा दूसरा स्क्रीन होगा। अबे दूसरी स्क्रीन की थोड़ी काउंट होती है। हेलो भाई, अगर आप हो तो हेलो बोले यार स्ट्रीम में, पता तो चले आप हो कि नहीं स्ट्रीम में। But why would हाँ they kidnap हाँ। a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case,
We'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. राजवीर बोलो। I'm करके truly देखो sorry यार, that you two threw क्या lots करके of trouble देखूं? with me. But दूसरे please स्क्रीन में help मेरा me get क्विस्ट him करके back. देखो, दो अच्छा लगेगा तुमको। दो जेंशन इम्पैक्ट मैं थोड़ी एक साथ चला सकता हूँ। एक टाइम पे तो एक जेंशन इम्पैक्ट तो एक ही चलेगी। दो इंस्टॉल कर लो ना फिर। ऐसे नहीं होता मित्र। All right. एक सॉफ्टवेयर Let's एक ही start होता by है। heading to where Auroron was seen last. आरोरॉन कौन है ये? ओरोरॉन ओरोरॉन बे 4 स्टार कैरेक्टर है। वो मुझे कब मिल रहा है फिर? चितलाली आई कि नहीं आई अभी तक? आ गई। ओरोरॉन कब मिल रहा है मुझे फिर? वो चेस्का के साथ आएगा। यार फिर तो मैं की कर नहीं पाऊंगा फिर पुलिस में। अरे वो तो लेकिन उसके बैनर में आ रही है ना, पायरो ऑर्कन के। कौन? पायरो ऑर्कन के सितलाली। सेकंड फेज में। सेकंड फेज में तो नहीं मैं करने वाला पर क्या पता ये अच्छी निकल जाए, लेकिन डैमेज ही रहे, सपोर्ट है ये। चितलाली This is the spot. An eyewitness claimed to have seen क्या Auroron पता, speaking अभी to तो some Fatui soldiers here. तब तो बोल रहे शायद स्टैंडर्ड बैनर में आ जाएगी। क्या मजाक कर रहा है? ये स्टैंडर्ड बैनर में इतनी अच्छी लुक्स वाइज तो देख यार, बहुत अच्छी है ये। I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. ग्रैनी है वो, पता होता I है। see no ग्रैनी reason why थोड़ी he ये wouldn't बोल रही get थी। involved with the इसने तो Fatui. बोला कि ये ग्रैनी नहीं है कि ऐसी लोग नाम ग्रैनी है इसका। एज हाँ वो नहीं है, ग्रैनी है। नहीं, ये सच में है, मुझे नहीं पता यार। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी तो दिख रही है ना। I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him. ओके Or ओके perhaps trying to extract information. मैं तो एक नहीं बोला सिम्मी। अरे चलो। अरे यार एक तो व्यूअर बताते नहीं यार। व्यूअर तुम हो कि नहीं यार, मुझे प्लीज बता दो। हेलो लिख दो यार, मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा तुम्हारे लिए स्ट्रीम यार। तड़कती भड़कती स्ट्रीम कर देंगे फिर, तड़का लगा देंगे अगर हो तुम यार स्ट्रीम में। हेलो लिखो यार। ऐसे अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे फिर बाद में चले जाओगे। हैं क्या बोल रहे हैं? मेरा क्वेस्ट कर दूं, मैं भी तुम्हारा व्यूअर है ना, व्यूअर हूँ। पहले पैसे निकालो 1000 फिर करूंगा। देख लो गाइस However, कैसा I doubt स्ट्रीमर है। anyone would believe me, given there are no तुम signs of a fight. व्यूअर के पहले दोस्त हो मेरे, प्रिय मित्र। वो भी तुम्हारे लिए फ्री में थोड़ी करूंगा मैं। नहीं भाई, मैं पहला तुम्हारे लिए मैं फ्री तुम्हारा पहला व्यूअर हूँ। तुम्हारे लिए फ्री में थोड़ी करूंगा। नहीं पहला व्यूअर तो मैं अपने लिए खुद हूँ। मेरी आंखें मेरी पहला व्यूअर है, ठीक है। खुद ही को सब्सक्राइब कर लो फिर। Name in that land. Feels kind of weird to see her so frustrated and helpless like this. Could she tell you a little more about him? Auroron? Well, he was. मुझे left at लगता है the ना side of ये the YouTube road मेरे as an साथ infant. खेला खेल रहा है, कोई And the व्यूअर है people of the नहीं, tribe took फालतू him in. बकवास कर रहा है। You could say that ऐसी हाइप everyone करा had a रहा है hand in मुझे। raising him. क्या He इसको learned a lot बताने के from लिए us. रोक रही है तब से। And once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids, living off of what he harvests from the garden. He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Oh well, let's keep looking. He can answer all of our questions once we find him. He's been raising phlogiston aphids for a long time, and since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. Let's follow the phlogiston trail. Huh? What trail? Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give me your hand. यार क्वेस्ट करो भी राजू, तुम्हारा दिमाग मत। मैं शांत रहे यार, मेरी नहीं हो रही, तुम अपनी बोल रहे हो यार।
दो भाई दोनों ही परेशानी कारकुन को इसके है ना। दो भाई दोनों ही परेशान जंक्शन से। What do you see? जिम भी मैं 6 दिन से गया नहीं, फिर से गलत ट्रैक पे चले गए। That's right. I used a spell ना to जिम गया temporarily 6 दिन transfer से, a लेकिन portion of my स्ट्रीम तो बुक senses करना to नहीं। you. For a short while, you'll be स्ट्रीमर able to बनोगे see the बोलते। phlogiston too. Wow, और you जिस दिन can व्यूज even आने share लगते your उस दिन जिम senses भागना with us. रहता दूंगा। First time Paimon's heard बैठा हूँ anything ना like आज मैं, that. आज 12 घंटे स्ट्रीम करेंगे जब तक ये कर नहीं देते यार कोई It इन्वेस्ट। requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, Good it's luck. a cinch for me. क्यों गुड लक क्या? Between the two of you, it Good luck क्या बोल seems रहे हो the बे? traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. It requires a very rare spell that most people are not adept at, but do not worry. It's a cinch for me. Between the two of you, it seems that Kratos' OP senses are a bit stronger than Paimon's. When I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good? Over here, this way! See, Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. What was that? What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. But given the looks on their faces just now... हाँ भाई सच में ओल्ड है ये एक ग्रैनी है सच में ये तो। हाँ ग्रैनी है, इसकी वॉइस मैंने अभी पढ़ा, इसका क्या बोल रही है ये। वो डिस्कॉर्ड में क्या टुडुंग टुडुंग हो रहा है? मुझे क्या पता यार। Or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. चल गया अभी। क्या चल गया? ग्रैनी है वो। वो बोल रही है मैं ओल्ड फैशन वगैरह हूँ, इनको पता ना चल जाए, ऐसा कुछ मन में सोच रही है। I think I just heard a voice. Wait, but it wasn't with my ears. Was it all in my mind? Was that Seat Lolly's voice? ये लोग उसकी वॉइस सुन सकती है क्या? बकचोदी चल रही है गाइस। ऐसा अच्छा बनेगा ना स्ट्रीमर में, ऐसा अच्छा स्ट्रीमर इंटरेस्टिंग बन रही है ना स्ट्रीम। बोलना नहीं है, बोलना बोल, ऐसे अच्छी स्ट्रीम बनेगी। एकदम सही बोल रहा। बता तो सही, देख ऑनेस्टली बता ना, फिर ही बोलूंगा ना मैं। ट्रैवलर हमारा थोड़ा हैरान हो रहा है यहाँ पे। Seems Paimon heard the voice, same voice, but she also looks like she understood what's going on. Let me think. I must be a side effect. It must be a side effect of the spell she cast. Oh my god, this changes everything. मत करो भाई, ये चीज सब कुछ बदल सकती है, अब हम लोगों के मन पढ़ सकते हैं। Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. गाइस देखो क्या हो रहा है, सितलाली अपने मन में बोल रही है, लेकिन ट्रैवलर जान पा रहा है कि वो क्या पढ़ पा रही है। भाई साहब, ये तो एक एनिमे का थीम ही हो गया, जैसे वो है एक रशियन में बोलती है और व्हाटएवर, बस समझ गए होंगे जो समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी है। सो वी कैन नाउ हियर हर थॉट्स थ्रू टेलीपैथी। वो दिस इज अमेजिंग, समथिंग लाइक दिस वुड ओनली हैपन विद सितलाली। वैसे यार मुझे ना पैग लगा के मैं की करनी चाहिए स्ट्रीम, शायद से तब ज्यादा अच्छी स्ट्रीम है ना, है ना जी? तो थोड़ा मैं क्यों टल्ली हो जाए भाई। Oh, they appear to be feeling quite confident. टल्ली यूट्यूबर ना रख लूं मैं अपना नाम। Go smoothly.
They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. लिटरली यार, कोई देख, अगर मुझे जानता होगा ना, वो देख लेगा स्ट्रीम भाई, सब मेरी क्या ही क्लिप एडिट करके बनाएगा फिर, है ना? हमारे दोस्त लोग भी बनाएंगे। यू बैट जस्ट भाई दीवार क्यों नहीं चढ़ रही? वैसे बड़ा खतरनाक है यार ये, कि कोई तुम्हारे मन की थॉट्स को पढ़ सकता है। मैं तो अपने थॉट्स में वैसा क्या ही सोचता हूँ कि भाई साहब आज इस बैंक पे डाका डालेंगे, कल उस बैंक पे डाका डालेंगे, बस फिर अमीर हो जाएंगे। है कि नहीं अनुज? सही बोल रहा हूँ ना? तुम भी यही सोचते हो? Hey, looks like there's a new camp over there. और क्या? Yep. सोचते Judging तुम by बहुत Garland's बहुत experience कुछ as हो a बेटे। guide, it definitely looks like people set up camp here. तो Wait. तुम्हारे वजह से The छूट गया था phlogiston here is. Let me see. ले पास है, यही तो रह गया था बस। Hyman sees a गिर small गया लावा ship में। here. This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. We've got to find. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, he was probably under the Fatui's Good. watch. गिर गया लावा में तुम्हारी वजह से। If they ऐसी notice काम us, करोगे we फिर? can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. No, I've got to stay calm and keep my composure. Don't let me down, don't let me down. There are traces of people staying here too. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. Kanich told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. It's about time that little brat said something nice about me. There are signs of a struggle, judging from what's left on the scene. There must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal, but was caught by the Fatui? Given there are two signals leading from here, we थोड़ी देर पहले कुछ पूछे थे। क्या? जूते I'll take वाला? this direction and leave the other one to you. Let's meet up again later. बोलना। एकदम सही समझो। तो क्या करूँगा उसका? Roron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. You little brat. अरे सितलाली का बच्चा है क्या वो? ग्रैंड चाइल्ड है क्या ओरन? हैं? नहीं। बोलना। नहीं। And off she goes. तो कौन से ग्रैंड चाइल्ड की नहीं बात? तो बोल रहा हूँ। तो कौन से ग्रैंड चाइल्ड की बात कर रही है ये? Traveler, did you hear all of that as well? कैपिटानो है क्या इसका ग्रैंड चाइल्ड? हैं? Once Seat Lolly left, कैपिटानो that voice went ग्रैंडचाइल्ड away as ओरोरॉन well. बे। Paimon even tried calling her name
हाँ ओरोरॉन है क्या फिर इसका ग्रैंड चाइल्ड सितलाली का? हाँ कहीं मिल गया था उसको, तब से वो बस की रहने के लिए नहीं बोलता रहता उसको। हाँ तो यही बोल रही है ना, ग्रैंड चाइल्ड है वो मेरा। So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she मेरा was गेम thinking, then she could probably खराब also हो hear गया what we were thinking in our heads. Hmm. She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. तो लग रहा है Huh, ending maybe part we're में a special story case and can hear her thoughts as a side effect. If you think about it, she's really got a lively inner world. It paints quite a different picture from Paimon's first impression of her. मुझे तो रोना आ रहा है बेचारी सितलाली के लिए यार, कितनी प्यारी है यार वो। She's just granny. Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find I anything know. up ahead. I'm feeling lonely, doing solo that online streaming. I want some viewer to watch me. There are traces of phlogiston here, but Did you find something? Huh. So we can't tell where Auroron might have gone from here. did you give me water yet? Yeah, I'll see you. भाई कोई बात नहीं देंगे तुझे। That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We can't make anything of these footprints either. Master hungry dinner meow. But he can't have just evaporated into thin air, right? We know he wasn't alone. He had all those Fatui with him. So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. मूवी अभी तो मैं जंक्शन की स्टोरी देख रहा हूँ, ठीक ही लग रही है, बियरेबल है। The Night Kingdom. How did I get here? वॉइस मेरी अच्छी है ना? हैं? I'm very sorry, but please do not move. I have no कोई desire इधर to हैरम, harm you. हाय मेरी अरे भाई क्या मजाक चल रहा है? रात को अल्ट्रा भाई साहब बैन हो गए क्या भाई? वेलकम टू स्ट्रीम बाय द वे। Very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. Okay. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. अबे अनुज तू है क्या? ये चंद्रमा भेज रहा है बता। तू ही है बेटे, मुझे पता है। And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else. कौन सा अगर कौन? मैं क्वेस्ट करूँगा वो However, चंद्रमा you're भेजेगा। now है in बेटे, an मून तो तू ही active, भेजता है। familiar ये domain शैडो to the लॉर्ड है ये। masters of the night wind. अरे अरे हाँ पे अरे स्ट्रीम में देखो ना। Give me your combat. See, I would not have अब been जाओ able बे क्वेस्ट होने वाला उसके बाद देख। I wanted. Okay. You are now in the Night Kingdom, familiar domain for the Master of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. अरे भाई कोई है मेरा मित्र, मुझे लगा मस्ती टांग खींचने आया वो यहाँ पे स्ट्रीम पे, सॉरी। What are the scene? Have you escaped the Ah, the Fatui's custody.
I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. My friend and I only तुमने left कर ली those क्या भाई ये traces to lure you here. आर्कन क्वेस्ट? Deceiving you was never our true intent, however. हम तो भाई It was लास्ट simply स्ट्रीम पे कर the रहे हैं भाई साहब. fastest and most feasible way for us to क्या set up a दैट meeting. चैट हैप्पी. थैंक यू भाई. It's Capitano. Traveler from afar. Be careful with this traveler. Her soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to her. बताओ भाई कर ली क्या आपने आर्कन क्वेस्ट? नाम बड़ा सही है भाई. ईथर हैरम. I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like... You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. क्या ही हो रहा है जंचन भाई? Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. Fine. Don't you worry, Paimon. Oh my soul. Forcibly removed from my body just now. That would explain why I couldn't hit Paimon at all. Hey, why are you sitting on the ground? Are you okay? See, Lolly! She froze for a moment and then just collapsed to the ground. Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me. They were being truthful, and they must have reasonable motivation for what they did. But should I trust them? If you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, exorcise any ghosts or weird stuff that you picked up in the... A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, just say the word. In any case, let's take a bit more time to rest now. Need to be more careful next time. Feeling better yet, traveler? अरे भाई पाइमन तुझे इतनी फिक्र क्यों है? तू इतनी अच्छी क्यों है? इतनी फिक्र क्यों करती है हमारी भाई तू? All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably being held inside. अरे पाइमन को हमारी वो हो रही है, फिक्र हो रही है कि हम वहाँ पे फेंट क्यों हो गए थे और नहीं खींच रहे थे हमको. Oh,
so it's close by. Then let's head over right away. I'm sorry, I don't know, Jesus, I was holding you. Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. We either move as one or not at all. But ठीक है। if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. ओके, अरे वॉर वैसे स्टार्ट कब होगी अनुज? हैं? वॉर कब स्टार्ट होगी इस गेम में? एक्ट 4 मैं एक्ट 3 में हूँ अभी। आरारोन से तो मैं मिल चुका हूँ अभी। अभी कितना बाकी है एक्ट? कैपिटानो से मिलो। कैपिटानो ने भी कि मिल गया। वो बोल रहा था कि पायरो और कौन से तुम कि ज़्यादा भी ट्रस्ट मत करो उसकी बातों में ब्लाइंडली, ऐसा कुछ बोल रहा था। बाद में खुद ही मिलके काम करता है तुम। हाँ तो तुम स्पॉइलर दे दो बेटे मुझे, कितना अच्छा है देखो। फालतू बकवास में करनी है तुमको, मैं कि जितना वो कहा है उतना उतना जवाब दिया करो। तो जूता मारूं तुमको भाई मैं लात मार दूंगा, उतना बताया करो जितना पूछा। लुक ओवर देयर। जूता से अबे शांत रहो, मुझे सुनने दो बस। शांत 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 बेटे, शांत शांत सुनने दो मुझे। I think she seems somewhere in the middle of That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. क्या पता वो लीडर ही हो ये। अरे भाई रुक जा भाई, तू कहाँ उड़ रही है? शांत। अरे यार ये एक तो और। All right, we'll take the lead. ओके यहीं पे बैठी रहे तू। Hey, quit daydreaming. Don't you have work? I cannot see the sun. Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. अरे वैसे आरआर एक तरह का वो है ना, बैट है ना, तो ये रात को नहीं ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। ये क्या बोल रहा, मुझे सनलाइट चाहिए, ये क्या मजाक है? बैट लगता तो बैट जैसे ही है स्किल थी इसकी जो लीक्स में आई थी। तुम उधर का लीक देख लो ना, स्टोरी guy's का जो बता रहा हूँ तो बड़ा दिक्कत है। हाँ तो स्टोरी का थोड़ी, मैंने कैरेक्टर का देखा था यार। नहीं तो वो भी स्पॉइलर ही हुआ। मुझे होएवर से थोड़ी बैन की है देखने से। Are you ready? On my फाइनली कुछ फाइट करेंगे। लेट्स गो फाइट, फाइट टाइम। भाई साहब इस गेम में फाइट इतनी कम क्यों है? You are toast. डैमेज क्या है और मेरा डैमेज ही नहीं जा रहा भाई, क्या मजाक हो रहा है ये? डैमेज कहाँ है मेरा? आरारोन भाई क्या हाल चाल, बचा लिया आपको। अरे और आ गए। और कोई हो भाई जिंदा? Granny. Paimon knows she's called Granny Eats to Lead, but it's still kind of weird hearing someone actually call her. And greetings to you too, other Granny. अदर ग्रैनी भाई साहब, हम ग्रैनी दिखते हैं तुझे? Granny, is that not right? You are Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so... I'm offended, man. I'm offended. How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. Grandpa बोलती है, पता नहीं। Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Oh, your words have pierced my heart like a thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why
Of course I'm not a child. It's ठीक just है भाई, Granny मेन always सीन तो taught हो me गया, to show खत्म कर दो gratitude स्टोरी। where it's due. 60 फ्री And मुझे since दे the दो मेरे को Masters of मेरा। the Night Wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? राजू Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. कष्ट हो गया बोल रहा हूँ। अच्छा, अरे यार ये शीतलाली क्या मॉमी वाइब्स क्यों अभी दे भी रही है? बचा हुआ बताओ यार। हैं ये शीतलाली मॉमी वाइब्स क्यों दे रही है? स्कोल्डिंग भाई, और उनको स्कोल्डिंग देगी, ये देख रहा है? be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of nowhere. Oh, so you do remember and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. हाँ, वो बता पायमन बैकफ्लिप मारती। वो तो मारती है। ये छोटी हाइट वाली की एटीट्यूड इतना क्यों होता है? ग्रैनी है क्योंकि वो वही बोल रहा हूँ, छोटी हाइट वाली की इतना होता है। You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here रियल when we थोड़ी है did. ये। Or we might be launching another search and rescue operation to find out where they put your severed head. I'm अभी चल sorry, रहा है ना वो Granny. चैट Be वाला। more careful next time. क्या? यही से बात करते हैं जिसमें तुम चैट जीपीटी? नहीं। और Next फिर time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? और Not फिर a chance. अरे बोल भी दिया करो अनुज यार, फिर बाद में चुप हो जाती हो बोल के क्या? कुछ। क्या बोल रहा था अभी तू? क्या बोलते हैं? बोल तो दिए जो बोलना था। ठीक है, जल्दी खत्म हो यार, मेरे को मैं जा रहा बीजिया भाई। क्यों बीजे में हो क्यों गया, जाना राजवीर मिल तुमको? गए 120 पे। 120 कैसे मिले? वो क्वेस्ट करने का और फिर वहां से क्लेम करने का। ठीक है, मेरे साथ इधर का ट्राइब का वो भी हो गया होगा, रुको जाके चेक करके आता हूँ। वो तो मेरे तीनों ट्राइब के वो हो गया, मैक्स हो गए। अच्छी बात है, मेरे भी कर दो। रेपुटेशन मेरे भी कर दो। चलो तो आ नहीं रही होगी तुम। बेच खाई वो तो मैंने भाई। कोई बेच खाते। हो गया भाई, तीनों ट्राइब मैक्स हो गया मेरा। सीरियसली यार, अपना लेवल बढ़ा ले। कितना लेवल है इसका? कितना कम, धीरे बढ़ता है इसका लेवल। नेक्स्ट 3 ट्राइब आएंगे, उसमें हो जाएगा पूरा, मेरे को फिर मिल जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? They didn't hurt you, did they? Like No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay. Now answer me honestly. Were you the one who helped the Pyroculus के लिए captain वो मिल escape गया after मेरे। his battle with the Pyro Archon? बस एक बचा हुआ हो अरे जाता तुम्हें है, ये वो अनुज वाला अनुज शांत रह, मुझे ये बता। एक वीडियो बनाता हूँ ना मैं, एक टॉपिक बता कि जंक्शन के रिलेटेड जो लोग देखें। तो क्या देखना चाहता है? Yes. एक वीडियो सजेस्ट कर। देख मजाक की बात नहीं, सीरियसली बोल। So why मैं did you बोल do रहा हूँ it? हाउ टू नॉट वॉच क्या? रेट्रोराज वो। अरे यार अनुज देख, मजाक नहीं, प्लीज सही सी बताया। Because
because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. चलो हमको Hey, बुलावा आ गया I'm no ordinary क्या granny. मीडिया भाई के लिए Would they really अच्छा dare मुझे to come बता तो after सही me? And you? आइडिया Did the बता यार gods give you a brain देख just लो for you to सब लोग not क्या क्या use अपलोड it? करते हैं हाँ ऑफिस वही तो फिर You यूनि really तो believe फिर वही तो everything बात you है said at मुझे face यूनिक करना है value ना and not stop to think? अरे यार चलो Thankfully, मैं the रख रहा हूँ Pyro बिगिनर Archon only टिप्स asked का that we find the क्या सीन है mysterious individual from the Masters of the हैं Nightwind and didn't आप slap दे your सकते name on a बिगिनर wanted टिप poster. Don't think बिगिनर for a तो देख second मैं that हूँ she नहीं doesn't टिप्स know तो दे ही what's सकता हूँ happening. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to बोल देना preemptively पहले तो आपको panic. डीपेस्ट चाहिए एक Have अच्छा you खासा forgotten the words that I've taught you? कोई बात नहीं स्क्रिप्ट में तुमसे नहीं ये लिखा रहा अनुज आउटडेटेड नहीं चीजें बताने वाला मैं लोगों को ठीक है यार मैं मैं डिस्कनेक्ट मैं कर रहा बताऊंगा हूँ चलो सबको भाई कि तुमको चाहिए पॉलिसी बना सुन लो तो सही मैं तुमको रख रहा हूँ अरे सुन बस तो ले यार तुमको चाहिए एक करेक्टर जियो मेन मैं ये समझ रहे हो सबसे बेस्ट एलिमेंट है जियो का अरे हो गया भाई डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं बस क्यों कर रहे हो तुमने यार तुम बोल दिया ना अरे तुम्हारा बैठे रहो तुम यार लास्ट में ऐसा मत बोल करो रहे नहीं और मुझे लोनली महसूस होगा फिर यार प्लीज खेलते हो रहो बैठे तुम रहो बीच अरे यार खेलते रहो ना तुम कोई बात नहीं बैकग्राउंड में तुमको पता है सुन तो सही अबे तो इधर से केबल निकालूंगा तो नेट बंद हो जाएगा वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने अनुज आप यार ऐसा नहीं यार प्लीज तो डिस्कॉर्ड पे तो बैठे रहो यार We can submit the मैं तो details of डिस्कॉर्ड this की तो बात camp कर रहा हूँ and the इधर से defeated डिस्कनेक्ट हो Fatui जाएगा as evidence हाँ of तो your फिर वही तो बोल रहा हूँ innocence. मेरे साथ बैठे रहो यार मुझे नहीं पता यार कॉल पे बैठे रहो मैं तो अरे यार राजवीर नहीं नहीं। Let's तुम अपने clean सच this में प्रिय place up मित्र and को get छोड़ के back to चले the जाओगे city. बीजीएमआई में Auroron, you खेल लो will remember बीजीएमआई this lesson well and बीजीएमआई खेल लो seriously मैंने कौन सा reflect मना on किया your तुमको actions. Also, once we return to अरे the तो city, रखने तो come दो to the speaker's chamber with me. फिर वापिस आओगे I'll कॉल need पे you to यार दो explain वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी everything. तुम मेरे को पहले प्रीमियर प्रो का बताओ कैसे करते बताऊंगा फिर पहले तुम कॉल पे बैठे रहो बस जब तक आज तक जब तक मैं स्ट्रीम नहीं बंद करता Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? You're Yes. I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about this. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do चलो is रख रहा हूँ ठीक ठीक है चले जाओ बाय फालतू बकवास Recite the 3 warnings. अब क्या किया जाएगा गाइस एक आधी मूवी देख लेते हैं फिर कोई पड़ी है क्या हमारे पास और गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग ये कौन सी गेम है ये कौन सी गेम है अबे ये कौन सी गेम है बे फ्री है क्या फ्री है या नहीं ये तो बताओ कौन सी गेम है ये अरे नहीं तुम तीनों खेल रहे हो या फिर क्या है ये सीन ओ no. You should emphasize that you were not in cahoots बॉम्ब with मारो the ना उसके Fatui. बॉम्ब मार दे पीछे 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 गन मार दे वॉक थ्रू देख लो गेम का
नहीं, अब फंस ही गए हो तुम यहाँ पे। आर्मी का तो पहला रूल ये होता है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। क्या पता सारा बंदा वो सबको मार ही दे। और लेफ्ट लेना, पेड़ पेड़ के लेफ्ट से देखना। हाँ, यहीं पे छुप जा, मैं तो बोलता हूँ। यहीं पे बैठा रहना, उसको जाने दे आगे। यहीं पे बैठा रहा, मैं तो बोलता हूँ। यहाँ पे तोड़ जाएंगे यहाँ। छोड़ो गाइस, चलो तुम करते रहो अपना, मैं जाता हूँ भाई। कंटिन्यू। How exactly did the masters raise this guy? Oh, right. तू यार इधर आ, कब कहाँ भाग जाती है तू भी। इधर बिठाया था ना तुझे मैंने। जा बहन उधर। हिलना नहीं भी। नेक्स्ट कहाँ चली? पायरो ऑर्गन के पास। You return to the city and bring you to the speaker chamber where you recount everything that has happened to Auron. I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for... That's right. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her? We'll give her a full report. We'll let you know once she... Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Lolly is willing to serve as your guarantor, then we can release you from custody. Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. I understand. Thank you. And thank you too, Grant. Well, at least you won't need to hide your face. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. हमको भाई अपना एंशिएंट नेम दे दे बस। हमको अपने काम से मतलब है। Once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient... Oh, thank you! You scratch my back, I scratch yours. अरे यार क्या ही It's as डायलॉग good है as ये। done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Bye for now. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay. Goodbye, other granny. अदर ग्रैनी। अरे यार ये क्या चैट है भाई, ये क्या बोल रहे हैं? ग्रैनी कब से बन गया हम? I would have never guessed that he could have done so much work behind Laliback. What does he really want? We're finally done. Alright, it's time to find some grub. Paimon, there's something I need to tell you. Huh? What is it? You tell Paimon side that everything happened.
Keep your voice down, Paimon. Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't? Oh, that Auroron. What is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was all that stuff about protecting Seat Lally and being forced to help the Fatui when he's actually been a willing accomplice all along. I'm still not completely sure. Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will support your choice no matter what, so if you want to go, we can go together. We still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the... जल्दी भाई, भी तो टाइम। भाई मूवी देख लेते हैं साइड में तब तक, अगर पड़ी है हमारे पास। लेट मी जस्ट चेक गाइस, गिव मी सम टाइम। पड़ी है गाइस, चलो एक फिल्म देख लेते तब तक हम। या फिर कंटिन्यू करते हैं जंक्शन ही, छोड़ो मूवी को। Bring it. Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. What was that? Good evening. Nice to see you again. क्या डायलॉग मारा है भाई साहब? It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. I'm terribly sorry. It's just a force of... And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's back. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too? Well, I could. ये पॉइंट पे आ बेटे तू। एक तो भाई क्या एक ग्रैनी बोलता रहेगा सबको। It's all clear. Over to... Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. I don't really care how the Fatui thinks of it. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back?
If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tavat, will pay for her mistake. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along, the details of which she has chosen to keep hidden from you? An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan. We have to make the decision for her, here and now. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa plant? Wait, by seizing that gems and making that decision for her, would you mean that the gems has something to do with the backup plan? I knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchecked. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Someone's here. Huh? The captain disappeared! Something is rapidly approaching. Something? Bad news, chump. It's your granny. The fuck? See, Lolly? When did you... I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying I'm not trying to avoid anything. Oh! And now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? I'm sorry, Granny. I feel you! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, see, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the note, so maybe just save the scolding for later, okay? Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't... You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me. अरे यार यार तुम्हें स्टोरी बढ़ा दी उसने अभी पता चल जाता क्या प्लान था उसका हमको अभी और आएगा और ये करो भाई साहब फिर ये करो फिर आपको पता चलेगा उसका प्लान क्या था हाल तुम्हें 2 एक्ट की स्टोरी बढ़ा दी इसने I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Why did you help the captain? No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose? Really? Just use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly
Why is he staring at us all? I'm sorry that you have to hear all this. You're very kind. Most people would have fled by now. Not everyone can handle Granny. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? Sorry. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables! I don't need anything for— Who's Aoife? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say to get through to you. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that incident. Seems they've started talking about some kind of tribal history. That's not it, Granny. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is— His voice. Auroron! Where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. Get back here this instant! Auroron! What is this? क्या ही हो रहा है Powder ये? from plant spores? Is that the trick he— What just happened? How was he able to suddenly get so far away like— It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have— little brat. That's it. The next time we meet, Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect Nat— I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or— We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. शॉर्ट स्टोरी में बता दी, लॉन्ग स्टोरी नहीं बतानी. Don't let me down, don't let me down. Do you two have some time? Feeling hungry? How about— Oh, right. It's been a while. Then let's go. We can find somewhere to sit down and— Really? That's right. See, Lolly has gotten a lot quieter since Auroron ran away. She's right. We're seasoned adventurers. Hey, come on now. You won't even let me take you out for some— Are you sure? Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Let me get this one. I might be an old hag, but I like to think I'm not completely— Sure, that's fine with us, but— Don't worry. I'm sure a juicy grilled—
Do you see two people standing by the door? They look like spitting images of each other. भाई क्या यार ड्रंक हो गया अब स्कीप करो भाई पिलर आर्क नहीं देखनी मुझे Huh? How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Give me another bottle, boss. Do you think she's drunk? There you go, miss. Oh my! It's not every day you get to see Greg. Oh, so you've heard of? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her? Wait, so you call her? Well, give it. Huh? Oh, please, Granny. I wouldn't dare. I'm just beyond happy to. All right, that's enough. Seat Lowy? Seat Lowy? Who's that? You got some gall. Are you still with us? You chumps come around here, picking fights with me? Well, you know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how I'm this big scary bully. It's always the same story. You brats start it, I finish it, and then I end up with the reputation of being some kind of terrible monster among the shamans. I mean, come on. Monster? Me? Granny Seat Lolly, you're... Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Oh yeah. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you. Don't क्या चल play रहा है यार dumb. ये Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. Thank you for all your teaching, ma'am. That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. Did she just fall asleep with her eyes open? Behind this pitch black curtain, a chapter of hatred reveals itself. She's meditating again. Is this another specialty of the... No, I'd say it's an ability that's unique to Sitlali herself. Warning, warning. Red. Red, the color of danger, has now... Huh? Traveler? What's wrong? I'm gonna hurl. Hang... You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to... How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened. क्या ही चल रहा है जंक्शन में Wanna take a quick walk and get some fresh air? There's so much that I want to say. Why not? Of course you can. Please, Paimon. Oh, Paimon gets it. You're hoping that we wouldn't think... No, that wasn't my point at all. Seriously, don't... Yeah. This is
as good a... Could you describe the event that took place during our rescue as a very alien? Bossy Ball. She shared some of her senses with you, though a spell allowing you to temporarily hear her thoughts. So, you heard? It's okay, Sweet Lolly. You had every right to complain about those things. I can't take it anymore! Why do these things happen to me? Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees the whole... So that, It happens to people in general, okay? Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something... Take a walk with me. looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess everything and accept their fate. Well, great view, right? Wow, it's beautiful! Oh no, what do I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... embarrassed. Here you are thanking. Let's just have a casual conversation. Really? You don't seem like the kind of person who keeps the... Well, I guess I used to be more of a stickler for... And you're right. I don't usually open up to the people of my tribe. I'm just an eccentric old hag to them. That story's been passed down so long. It might as well be true. What? You're just a regular... The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny eats sleep. Well, you are powerful. Are they afraid of you? Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that, and people stop knowing how to deal with you. What about you? Are you scared of me? We don't find you scary at all. Huh. That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. I make people realize that no matter how hard they work, they'll never become a living legend like me. Oh, not to brag or anything. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. Yes, but Mawika already told you about her plan. And you've given so much help to Auroran and me. You deserve to learn the full truth. Auroran's not like other people. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about... No one knows who his parents were. He was just left on a rock. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And in Auroran's incomplete soul, they saw a possibility for a possibility to turn Auroran into a vessel for lost souls. The ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroran would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place, strengthening the ley lines and completing the ceremony. Wait, that doesn't sound right. Now, you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift, unable to find a way back to the ley lines. This loss of souls damages the Night Kingdom even... The ceremony can send back countless souls at once,
which would benefit the Night Kingdom and the souls themselves. Of course, the vessel, Aurora. I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. A suitable candidate for the ceremony appears, and now you have the chance to make things better. When the chief asked for my opinion, I didn't give my approval, but I didn't object either. So they went ahead with the ceremony. It failed, and Auroron escaped with his life. Pathetic, isn't it? By not objecting, I basically gave them the go-ahead. Maybe they didn't have my explicit approval, but it's not like I did the right thing. If the ceremony was successful, of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death? By using a human life as a tool? It's not right. So, when I learned the ceremony had failed, I was ashamed by my inaction. And the plan was never a secret. Or, I guess I should say, there was no point to keeping it a secret. A simple investigation from Auroron would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. But just as I was about to put all of it, he asks this question. Would Natlan have been saved if the ceremony succeeded? Wait! What? He knows that, but he still feels guilty. Auroron has a strong ability to perceive souls, more than any of us. He understands just how dire the situation with Layla. Maybe he chose to work with the Fatui because he still thinks he owes a debt to Natlan. I can only imagine. Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what brought Auroron into this. Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back! You don't look so good, Sweet Lolly. Probably drank too much. Okay. Forget. Hey, we're friends, aren't we? Besides, you already said you owe us a favor. Good point. Well... Friends. I like the sound of... Auroron's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan? Do you really believe what the captain told us? Yeah, you're right. But she's probably asleep. We can find her first thing. चलो भाई पायरो और उनके पास चलें अभी। अरे यार तू क्यों बात कर रही है मेरे से? मुझे नहीं करनी बात। ओह माय गॉड, व्हाट ए रिवॉर्ड? क्या रिवॉर्ड नहीं दे रही थी? अरे यार क्या आई आवाज। रख ले भाई अपनी खाना अपनी बात। सोने जा रहे थे भाई, तो मैं भी नहीं जा रही अब तो। मुझे भी नींद आ रही। क्या हो गया बाहर? You're already here. Wow, you're up early. Let's not bring up last... Anyway, I was also woken up by the commotion.
Looks like all the warriors from the stadium are on the move. I heard many areas have been attacked by the Abyss, including the Masters of the Nightwind. I need to head back right away. The Abyss attacked again? Are you sure you can I'll be fine. We also have the support of the warriors stationed at the stadium could always use more manpower. So I'm done making excuses for him. I was the one who vouched for him, so I need to report back to the speakers, but I should be able to convince them to let me go back to my... As for the ancient name, once we handle this crisis, I'll talk to Shilonen right away. Thank you. She left in a hurry. Looks like a lot of people are heading to this... Traveler, over here! Perfect. Our star Outlander has appeared. Oh shit, सीधा मौत नए ऑफिस में बैड बिचेस भी हमें Task of forging. Just my way of saying how awesome you are. We've got a real emergency on our hands, so this is the perfect time for you to show off your skill. अरे यार मैं तो थक गया आज के लिए यार यहीं पे स्टॉप करते हैं यार ये करके Collective of plenty, the ये वाला masters of the chat Nightwind, the children of echoes, and a number of our camps and outposts in the wild. Yes, and the attacks are increasing in frequency. The tribes have plenty of defenses, so they're safe for now. But I can't say the same for the adventurers and merchants stuck in the wild. Chaska and I have been searching for survivors and treating the wounded. We just got back, but we need to head out again soon. ठीक है भाई ठीक है समझ गए अपना काम करो जल्दी जाके फिर यार मुझे क्यों बता रहे हो Where are you gonna go? I'll go help the children of echoes. They're the closest, so I can start fighting right away. What about you guys? We could go together. Yeah, that does sound important. Nowhere. Who knows? Maybe yours truly will have the Abyss on the run by the time you're finished. That would be pretty great, actually. I hope my tribe... It'll be fine. Your tribe doesn't do all that bodybuilding for nothing. Let's part ways here for now. And most importantly... Oh, and some of us need to avoid getting contaminated by dangerous-looking substances. Koichi, do we really have to do this now? It's alright. She's just looking out for everyone. Alright, let's hurry up and talk to the Pyro Archon so we can help the others.
We should take a break after all. Not running around. Let's rest here for a bit. चलो गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी बात बोर हो गया तो मैं यार थक गए। चलो गाइस मिलते हैं बाद में, बाय।